माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Now matters under Rule 377. First speaker is Shri Subhash Chandra Baharia ji. धन्यवाद सभापति महोदय। भारत देश में आदिकाल से वनवासी बंधुओं का हमारी संस्कृति के संरक्षण, वनों के विकास एवं सुरक्षा तथा कालांतर में स्वराज की स्थापना में भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा ने संविधान में उनके अधिकारों के संरक्षण तथा बराबरी के लिए सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वनवासी जातियों को सूचीबद्ध कर आरक्षण की व्यवस्था की, परंतु यह ध्यान में आया कि इसका लाभ बड़े पैमाने पर उनको मिल रहा है जो धर्मांतरण कर ईसाई अथवा मुसलमान बन गए। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे परिवारों को आरक्षण से वंचित किया जाए, क्योंकि इन्हें धर्मांतरण करने से अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अनुसूचित जनजाति के बंधुओं को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। इसके लिए आवश्यक है कि धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्म स्वीकार कर चुके और इसके कारण जनजाति समाज का हिस्सा नहीं रहे उन परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। Shri N.K. Premchandran ji. Thank you, Mr. Chairman. Sir, my submission under Rule 377 is relating to the ESI benefits to the Life Insurance Corporation agents. Sir, we are having more than 13 lakhs of LIC agents in the country. Unfortunately, they are not having any welfare scheme or benefit out of the central government scheme. So I would like to make this submission on behalf of the LIC agents. So the LIC agents are the backbone of the LIC, but the Life Insurance Corporation is not ensuring the welfare of LIC agents. Agents are giving wholehearted support to the organization in building up the organization. Sorry. The recent policies adopted by the government are adversely affecting the work of LIC agents. Now the LIC agents are facing various problems. The main issue is the lack of fund for their treatment. The demand of extending the ESI facility to them has not been considered till this date. The LIC agents are one of the most eligible categories of people who are entitled for the ESI scheme as per the existing norms. But the authorities are not initiating any steps to extend the ESI benefits to the LIC agents. Their repeated demand for ESI benefit is still pending before the Labour Ministry as well as the Finance Ministry. Hence, I urge upon the government to initiate immediate action for extending the ESI benefit to the LIC agents. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Jayant Sinha ji. Yeah, fine. Shri Nitesh Gangadev ji. Thank you, Chairman, sir. Sambalpur, my parliamentary constituency, is located in the western region of the state. It is known as the commercial and industrial hub of western Odisha. It is well connected by air, road, rail and transporting goods in bulk quantities to other parts of the state. I urge the central government to set up a medical equipment park at Sambalpur during the financial year 2022-23. Thank you, sir. Thank you. Shri Subrat Patak ji. Shri Nihal Chand Chauhan ji. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति जी, हमारा देश विविधताओं का देश है। पूरी दुनिया में अपने समृद्धि और इतिहास संस्कृति की धरोहर के लिए राजस्थान प्रदेश भी प्रसिद्ध है। दुनिया में लगभग सभी जगह पर्यटन यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। देश में पर्यटनों की संख्या बढ़ोतरी के लिए हमें नए पर्यटन स्थल विकसित करने की जरूरत है। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर में हनुमानगढ़ में मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो प्राचीन 5000 साल पूर्व है, वहाँ पे एक भटनेर दुर्ग है जो 17वीं शताब्दी का है, जो ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थल ये दोनों ही विकसित करने की जरूरत है।
इसके साथ साथ में भारत पाकिस्तान सीमा पर गांव नग्गी, लखा हकम और हिंदूमल कोट, जहां देश की आज़ादी से पहले दिल्ली से लाहौर के लिए ट्रेन चला करती थी, और लखा हकम में आज भी रेलवे स्टेशन मौजूद है। वहां पे कई वीर शहीदों के स्मारक भी है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सभाएं और देशभक्ति के कार्यक्रमों का समय समय पे वहां पे आयोजन भी करते हैं। इनको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जरूरत है। सभापति जी, मेरे आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि इन ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाए, ताकि पर्यटन के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री विवेक नारायण शेजवालकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भर में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान 3 जनवरी को ही शुरू हो गया था। 13 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। टीकाकरण का उद्देश्य इन सबको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना है। इस आयु वर्ग के शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चों को तो यह वैक्सीन लग रहा है, लेकिन इस आयु वर्ग का एक तबका ऐसा भी है जो शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं जाता है। देखने में आ रहा है कि यह तबका वैक्सीन लगवाने के प्रति रुचि भी नहीं दिखा रहा है। सरकार इनको वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित करने के लिए क्या कदम उठा रही है, जिससे सरकार इस आयु वर्ग को वैक्सीन लगवाने के लिए तय किए गए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री दीप सिंह शंकर सिंह राठौड़ जी। श्री भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मान्यवर, राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान, जो कि पूर्व में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से संचालित था, एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का हिस्सा 60-40 है। लेकिन गत 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते उक्त योजना में बजट आवंटन कम होने के साथ साथ राजस्थान सरकार द्वारा नवीन विद्यालयों की स्थापना एवं 9 क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या ज्यादा होने से राजस्थान प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था का भौतिक ढांचा डगमगा सा गया है। तो दूसरी ओर गत 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के कथित जबरन फीस वसूली और विवादों के बीच आम जन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से सरकारी स्कूलों में लगभग 20 से 25% नामांकन भी बढ़ा है। लेकिन प्रदेश के उक्त सभी सरकारी विद्यालयों में बैठने के लिए समुचित कमरों एवं अन्य भौतिक सुविधाओं का अभाव होने से बच्चे एवं अभिभावक परेशान हो रहे हैं। कई विद्यालयों में मजबूरीवश बच्चों को खुले स्थान पर तो कई विद्यालयों में बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। सभापति महोदय, अतः अजमेर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्तरीय विद्यालयों के अंतर्गत राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगभग 500 अतिरिक्त नवीन कक्षा हेतु आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में आवश्यक बजट आवंटन करावे। साथ ही जिस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का हिस्सा 60-40 है, की भांति इनका लोकार्पण एवं शिलान्यास संबंधी संसदीय क्षेत्र के सांसद द्वारा कराया जाता है। उसी भांति योजना अंतर्गत निर्मित विद्यालय कक्षा कक्षों के लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु संबंधित संसदीय क्षेत्र के सांसद के अनुमोदन एवं स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान कराने के सक्षम में विभागीय आदेश जारी करावें, ताकि केंद्र सरकार की उक्त जन कल्याणकारी योजना का जनहित में ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री पर्वत भाई सभा भाई पटेल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत LC नंबर B/159, जो कि भीलडी समदड़ी सेक्शन रेलवे लाइन पर स्थित है, यहाँ से गुजरात राज्य का
हाईवे नंबर 54 जो कि 4 लेन है और डीसा तथा थराद के बीच 3 है, इसी LC B/159 से क्रॉस करता है। ज्ञात हो कि ये राज्य की सिर्फ 3 तालुका जो मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत ही आते हैं वहां से गुजरती है। यहाँ पर आबादी बहुत है के कारण और ट्रैफिक की अधिक होने के कारण हम रेलवे से आरओबी के निर्माण की मांग करते आए हैं। गुजरात सरकार ने आरओबी के निर्माण के लिए 50% राशि की स्वीकृति भी दे दी है, परंतु रेलवे की तरफ से अब तक इस आरओबी के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि रेलवे इस आरओबी का निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई करे व इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए, जिससे कि मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों के इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। थैंक यू। श्री सुदर्शन भगत जी। सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि मैं झारखंड राज्य के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह पूरा क्षेत्र वन संपदा से सुसंपन्न है। मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के गुमला जिले एवं आसपास के राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में बहुआयत में पाने जाने वाले साल एवं महुआ के वृक्षों के सदुपयोग के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। सामान्यतः हम खाद्य तेल के रूप में उत्तर क्षेत्र में सरसों तेल एवं दक्षिण में नारियल तेल पर निर्भर हैं। सरसों का तेल थोड़ा महंगा भी हुआ है। बहुत से घरों में पाम ऑयल भी प्रयोग किया जा रहा है। रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के जिलों में प्रचुर मात्रा में साल बीज एवं महुआ बीज से खाद्य तेल इसका एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक और सस्ता विकल्प हो सकता है। माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के बड़े क्षेत्र में साल के बीजों से निकलने वाले तेल का प्रसंस्करण कर खाद्य तेल के रूप में प्रयोग होते उत्पादन किया जा सकता है। साल बीज के रूप में हमारे पूरे क्षेत्र में वन उत्पाद की उपज होती है जिसका कोई संग्रहण नहीं किया जा सकता व उसकी कोई व्यवस्थित प्रसंस्करण व्यवस्था नहीं है। यही महुआ के वृक्ष का मामला है। महुआ के बीज से भी उत्तम प्रकार का खाद्य तेल निकालता है। अतः इन दोनों उत्पादों के संबंध में कोई प्रसंस्करण उद्योग गुमला में स्थापित किए जाने से इन वन उत्पाद से खाद्य तेल निर्मित किए जा सकते हैं। माननीय महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड के गुमला में साल बीज और महुआ बीज से खाद्य तेल बनाने का बड़ा प्रसंस्करण उद्योग इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अतः सरकार गुमला जिले में इन दोनों साल बीज और महुआ बीज से खाद्य तेल निकालने वाला एक बड़ा कारखाना सरकार स्थापित करे, जिससे स्थानीय लोगों का भी आर्थिक संवर्धन होगा एवं इससे वन उत्पाद का सदुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो सकेगा। असहाय जनहित में सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। धन्यवाद। थैंक यू। श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सभापति महोदय। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान झारखंड की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। कोविड-19 महामारी से झारखंड के स्वास्थ्य ढांचे की असंख्य कमियां उजागर हुई हैं। 2019 की रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के औसतन 50% से अधिक स्थान रिक्त थे। वहीं जिला और उप जिला अस्पतालों में 48% स्थान रिक्त हैं। साथ ही नर्सिंग स्टाफ के कुल 59% स्थान रिक्त हैं। कुल पंजीकृत डॉक्टरों के मामले में झारखंड 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे के 8 नामों में से एक है। वर्तमान में यहां 8000 से अधिक लोगों के लिए एक डॉक्टर हैं, जबकि WHO का मानक प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का है। संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान के बावजूद झारखंड सरकार डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती करने में विफल रही है। प्रोत्साहन की कमी, अनुचित नीतियां और खराब कामकाजी परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विशेष रूप से खराब है। राज्य सरकार की विफलताओं के कारण हमारे लोग कोविड-19 महामारी के दौरान
बहुत अधिक पीड़ित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से झारखंड सरकार से अपनी व्यवस्थाओं को तुरंत ठीक करने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मजबूत व सुविधा युक्त व्यवस्था बनाने की अपील करता हूं। थैंक यू। श्री संजय रामचंद्र पाटिल जी इज नॉट हियर। श्री सुधाकर तुकाराम शांगे जी। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कतिपय तकनीकी खराबियों के कारण काफी समय से योजना के अधीन योग्य व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुझे संबंधित अधिकारियों से पता लगा है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में योग्य दावेदारों के आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे लातूर जिले में योजना के तहत 1,52,079 आवेदनों में से कंप्यूटर में से बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को अर्थात 32,276 अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। हालांकि इस योजना के दिशा निर्देश के तहत इनमें अधिकांश अभ्यर्थी आवास के लिए सभी तरह की पात्रता रखते हैं। राज्य स्तर से अधिकारी सॉफ्टवेयर में इस तकनीकी खराबी के ठीक करने के लिए असमर्थ है। बड़ी संख्या में योग्य पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकार होने के कारण यह आम जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया है। इस सदन से माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाए तथा सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को अतिशीघ्र ठीक किया जाए तथा इस सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अधीन पात्र सभी उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री रमेश बिदुरी जी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन एवं विशेषतः माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह पहले भी देखने में आया है कि दिल्ली में जैसे मस्जिदों के मौलवियों को, मुजाहिदीन को तो वेतन मिलता है, परंतु मंदिर के पुजारियों को नहीं मिलता। ये डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। इसी अनुच्छेद के अनुसार लोक सेवा नियुक्तियों में संपूर्ण देश में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलने से समाज में उनका स्तर बढ़ता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी कमीशन को भी संविधान का दर्जा इसीलिए दिया कि उनकी आबादी 50% से ज्यादा है तो वो भी उसी स्थिति में आ सकें। दिल्ली में 50% ओबीसी लोग रहते हैं। हाल ही में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में कुल 123 और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में कुल 45 रिक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। देश में अन्य राज्यों में अनुच्छेद 16(4) के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, परंतु दिल्ली सरकार द्वारा ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसके कारण उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। वहां एक तरफ तो वो कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर हिंदू कश्मीरियों का उपहास उड़ाते हैं डिस्क्रिमिनेशन के तहत, दूसरी तरफ ओबीसी समाज के जो 50% दिल्ली में लोग रहते हैं जिनके कारण से मुख्यमंत्री बना है, जहां कथित रूप से भेदभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय विधि न्याय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया इस विषय पर कुछ प्रभावी व्हाट इज सबमिटेड गोस ऑन रिकॉर्ड, व्हाट यू हैव ऑलरेडी, जो आपने पहले जो लिख के दिया वही पढ़ना है। नहीं दादा जी, फाइल आपको दिखाने के लिए, वो आपको बताने के लिए तुम भी बगान नहीं कर रहे हो। प्लीज कृपया आपके माध्यम से माननीय विधि न्याय मंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया इस विषय पर कुछ प्रभावी कदम उठाएं जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदान किए गए समानता के अधिकार का पालन सुनिश्चित हो तथा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू करवाया जाए, जिससे दिल्ली राजधानी में रह रहे अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार उनका स्तर बढ़ाने में उन्हें अवसर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री अशोक कुमार रावत जी।
श्री रोदमल नागर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ एवं उसके आसपास के नजदीक जिलों जैसे शाजापुर, आगर, गुना आदि जिलों में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इन क्षेत्रों की 80% जनता का जीवन कृषि पर ही निर्भर है। हमारे क्षेत्र राजगढ़ में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 रेलवे लाइन जंक्शन भी प्रारंभ हुए हैं। साथ ही शासकीय जमीन एक ही स्थान पर 2000 हेक्टेयर उपलब्ध है, जहां बड़े बड़े बांध बनने के कारण 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित होगी। राजगढ़ जिले में कई मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं तथा कई पर कार्य चल रहा है, जिससे क्षेत्र की कृषि सघनता बढ़ाने हेतु कृषि के माध्यम से युवा उद्यमी कृषक समूह निर्माण करने के लिए एक कृषि प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र खोले जाने की अति आवश्यकता है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी अत्यंत पिछड़ा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिले में शामिल किया है, इसलिए क्षेत्र को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और अधिक रोजगार मूलक बनाने हेतु पौधों की खेती एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलना चाहिए। अतः कृषक हित में क्षेत्रवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप राजगढ़ जिले में कृषि प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री डॉक्टर रामपति राम त्रिपाठी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश में रेलवे का जो देवरिया सदर रेलवे स्टेशन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे मंडल वाराणसी के अंतर्गत आता है। वहाँ स्टेशन के पूर्वी छोर पर माल गोदाम स्थित है। पूर्व में जब माल गोदाम स्थापित हुई तो शहर की आबादी कम थी। आज वर्तमान में शहर का बहुत विस्तार हुआ और माल गोदाम घनी आबादी के अंतर्गत आ गया, जिससे वहाँ पर भारी वाहन खड़े होते हैं तथा आते जाते हैं। उससे वहाँ घंटों तक रास्ता जाम होता है एवं लोगों का आवागमन अवरुद्ध होता है, जिससे लोग आक्रोशित होते हैं। इसकी स्थानांतरित करने की बात समय समय पर की गई और अधिकारी व्यवहारिक रूप से सहमत भी हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही करने में बहानेबाजी करते हैं, आर्थिक कारण बताते हैं। जनभावना और शहर की परिस्थिति को देखते हुए मेरा सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस माल गोदाम को अहिल्यापुर या नून खार जो रेलवे का स्टॉपेज है वहाँ पर पर्याप्त स्थान भी है। आग्रह है माल गोदाम को अहिल्यापुर या नून खार में स्थानांतरित करने का कष्ट करें, जिससे जन भावनाओं का सम्मान हो और इस समस्या का समाधान हो। धन्यवाद। थैंक यू। श्री रवनीत सिंह जी। Thank you, Chairman Saab. As per recent report of the United Nations Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, India is likely to face extreme weather conditions due to climate change on almost all fronts, including rising sea levels and groundwater scarcity in future. This may lead to a fall in crop production beside a rise in health hazards. The report warns that our country will be one of the countries to be most economically harmed due to climate change. Climate change is impacting every part of India, which is extremely worrying. As per the report, the heat and humidity is likely to pass limits of human survival in India. Beside huge fall in yield of wheat, pulses and cereals, fishery sector is also expected to be adversely affected, thus endangering food security. The government needs to take strong measures to spread awareness and fight against climate change in the country. The government also needs to recognize the compounding nature of disasters such as cyclones, with heat waves and urban droughts, and develop a comprehensive plan to combat climate change. There is also a need to aggressively
push for support from developed countries to fight the climate hazard being faced by our country. Thank you, sir. Thank you. Shri Deepak Beji. माननीय चेयरमैन साहब, मेरा क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों से हजारों आदिवासी अपने घर और गांव छोड़कर अपने सीमावर्ती प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पलायन कर गए थे। लगभग 15 से 16 वर्ष पूर्व पलायन कर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बसे आदिवासियों को अब यहां की सरकारें अपने राज्यों से कथित रूप से जबरन निकाल रही है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये आदिवासी भय के साये में जीने के लिए विवश हैं। इन आदिवासियों को फिर पलायन हेतु बाध्य किया जा रहा है। उक्त परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला प्रशासन की टीम गठित की है ताकि उन आदिवासियों को चिन्हांकित कर मदद कर सके। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार उक्त आदिवासियों के पुनर्वास हेतु 19-20 के मिजोरम से त्रिपुरा गए ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास की तरह नीति बनाए और जो आदिवासी जहां हैं वहां उन्हें रहने का अधिकार दे एवं वनाधिकार अधिनियम 2006 के धारा 3.1.m के प्रावधानों के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वन भूमि पर जहां जिसका कब्जा है उन्हें उसका अधिकार दे, जिससे पलायन कर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बसे आदिवासियों को पुनः पलायन की समस्या का समाधान हो सके और उनके भरण पोषण के समक्ष दिक्कत न आए। क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब, यह मामला 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। इसलिए केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर उन विस्थापित आदिवासियों को न्याय दिलाने में मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती गीता कोरा जी। डॉक्टर वी कलानिधि जी। डॉक्टर टी सुमति तमिलचित तंगपांडियन। Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. Beaches are a natural gift in Tamil Nadu, and the entire coastline from Chennai to Kanyakumari needs regular beach cleaning and upgraded infrastructure with state-of-the-art technology. Beaches are not only a tourist destination, sir, but they also serve as a habitat for nestling olive ridley turtles and small marine species. Hence, it is the urgent need of the government to periodically address the sanitation issues and conserve the ecological value of beaches in Tamil Nadu. Sir, under the Beach Environment and Aesthetic Management Service, BEAMS program, initiated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, various activities on pollution abatement, beach beautification, awareness on environment education and safety and surveillance are to be implemented. Out of the 10 beaches selected by the Union government, sir, it is sad to note that none from the Tamil Nadu finds a place in the list. Sir, that is my worry here. There are viable scope for the setting up of watchtowers, high-speed rescue boats, clean, odor-free bio-toilets at Marina and Elliott's beaches. Beautification of the Neelangare and Kotivakkam beach stretches is also in the pipeline. Similar proposals will be carried out in Mamallapuram, Tuticorin, Rameshwaram and Kanyakumari, with the municipal body of each district executing the work. This requires an additional funds of rupees 100 crores. Therefore, I urge upon the Union government, through the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to provide rupees 100 crore for the beautification and provide blue flag clarification for beaches in Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you. Shri Pocha Brahmanand Reddy. Thank you, Honorable Chairperson, sir, for giving me this opportunity. The Commission for Agriculture Cost and Price is mandated to recommend minimum support price for the benefit of farmers. MSP for the major agriculture products are fixed by the government each year after taking into account of the recommendation of the Commission. As of now, CACP recommends MSP for 23 commodities. As per the analysis, it is observed that the Commission for Agriculture Cost and Price underestimates the price indices of inputs, which is highest for machinery and fertilizers. The
underestimation has increased with time. The underestimation is higher for C2 cost as compared to A2 plus FL cost. If these costs are accurately estimated, the minimum support price for the crop should rise by at least 20 to 30% as MSC is linked to production cost. Actually, production costs are higher than the CACP estimates for several crops. There is an urgent need to reconsider the methodology of fixing MSP so as to achieve the target of doubling the income of farmers. Hence, I urged the Minister of Agriculture and Farmers Welfare to reconsider the methodology of fixing MSP so that farmers could be benefited. Thank you, sir. Shri Khalilur Rahman ji. Not there. Shri Vinayak B. Raut. Shri Sunil Kumar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मसान नदी पर गाइड बांध बनवाने के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर जंगलों और नदियों से घिरा हुआ भूभाग है। मसान नदी की लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। यह नदी रामनगर प्रखंड के ठोड़ी कुटी गांव से शुरू होकर दोन और त्रिवेणी कैनाल को पार करते हुए लौरिया प्रखंड के तेलपुर गांव में सिकरहना नदी में जाकर मिलती है। मसान नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ की वजह से प्रखंड रामनगर, बगहा 1 तथा बगहा 2 के गांव बुरी तरह प्रभावित होते हैं तथा लाखों की संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं और जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है, जिस वजह से स्थानीय निवासी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मसान नदी पर यथाशीघ्र गाइड बांध बंधवाने की कृपा प्रदान की जाए। धन्यवाद। Shri Anubhav Mohanty ji. Thank you, sir. So studies have shown that post-divorce, 100% dependent women find themselves in a financially and socially poorer situation. Financial insecurity forces them to continue the relationships despite regular abuses by their counterparts. While starting out in the 1980s, the concept of SHGs has gone beyond its original financial and economic objectives to include women's empowerment as its goal. Several studies have shown that women's membership to SHGs contributed significantly to the increase not only of their personal and household incomes, but also of their sphere of influence in their household and communities, notably in the areas of health and sanitation, water, children education, and liquor ban. Under the able leadership of our revered leader and Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, sir, the Odisha government implemented Mission Shakti, which is one of the most successful programs since 2001. It provides support to about 7 lakh women SHGs, including more than 70 lakh rural women who have been successfully assisted by enabling them to access financial assistance, undertake capacity, strengthening to enhance their livelihoods and income. Hence, through you, sir, I would like to request the central government to consider allotment of a special fund for women's SHGs in Odisha, which will enable them to secure their livelihood, sir. Thank you so much, sir. Jai Hind. Thank you. Shri Ram Shiromani Varma ji. सभापति महोदय, आपने नियम 377 के अधीन सूचना पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के सबसे अधिक 24 से 25 वर्ष व्यतीत किए और धम्म परिवर्तन और विश्व शांति का उपदेश दिया। इस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को देखने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से लाखों पर्यटक और बौद्ध अनुयायी प्रतिवर्ष श्रावस्ती आते हैं।
यह जिला आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आता है। 2 साल पहले नागर विमानन मंत्रालय द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट को चालू करने की घोषणा की गई थी, जिसका निर्माण का कार्य काफी समय से धीमी गति से चल रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराकर एयरपोर्ट को चालू कराया जाए। धन्यवाद। श्री हसनैन मसूदी जी। Honorable Chairman, thank you for permitting me to draw attention of this House and the government to a serious challenge confronting our healthcare system. Sir, childhood cancer of late has emerged as a grave cause of grave concern. Each year, an estimated 500,000 children below age of 19 develop cancer. 1/6 of such cases are reported in India. Though childhood cancer cases, mostly in case of girl child, are suspected to be underreported. The most common types of the childhood cancer reported include leukemia, brain cancers, lymphomas, neuroblastoma, and what you have submitted under 377, you have to read that only, please. The matter is different. That is precisely. While in developed countries, you want a copy? I can send you a copy. Please hand over him a copy. While in developed countries, please hold your speech for a minute. Is there any you can just read that. Is that there is any what change in the subject? No. What you have written. Just elaborate with more stats. What you have written, you have to read it out. In developed countries with high income, better health care, is that written there? Facilities and accessibility, timely diagnosis. 80% of children with cancer are cured. The recovery rate in low and middle income countries like India, the recovery rate is as low as 30%. Please read what you have submitted. Whatever is written will go on. Only 30% of the patients. Sir, it is same subject. I don't debate. You can't change the subject. So the rule of the House is that you can't change the subject. We have to not change it. Not change it. Just 30%. I'm sorry, you can't change the subject. What you have submitted. Only 34% of. This is same. See, in this. Only about 7,000. You have to read line by line what you have submitted. Please go to it. About 76,805 children each year are diagnosed to be suffering from cancer. Only 34% of such patients reach hospital, and overall survival rate of such patients is less than 20%. Yes. Is that same? The developed countries have a different story to tell. The survival rate is up to 80%. Same? And in high income or developed countries, on the other hand, 60% or 66% of the children with cancer who do not get it diagnosed or make it to the treating centers do not survive. Recently, on the eve of International Childhood Cancer Day, we were reminded of the bridge to bridge the gap in healthcare and ensure early detection of child cancer to combat healthcare inequity. Sir, so we have to make an effort to bridge this gap in childcare in developed countries and underdeveloped countries and in developed countries like India and mostly developed countries. So what we need to do is that we have to strengthen our healthcare system and set up health center facilities at least at regional level, timely diagnosis, telehealth, teleconsultation, telemedicine and IT tools need to be integrated with the medical and provide medical advice to the patients with attendance. Thank you. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. The Honorable Finance Minister in her budget speech of 2021-22 in para 67 had mentioned that the city gas distribution scheme will be extended to another 100 cities in India in the next 3 years. Considering the fact that in Kerala, already the scheme has been extended to 11 districts and 3 districts, including my home district, Kottayam, this has not been extended. Kottayam, Idukki and Pathanamthitta are the districts which are adjacent to the already selected districts. Through this submission, I would request the Honourable Minister to implement the scheme in these 3 districts also during 2022-23. Otherwise, the people of these districts may feel that they have been denied the benefit of cheaper, safer and environment-friendly fuel. Thank you, sir. Item number 15,
We'll take up the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountant, and the Company Secretaries Bill 2021. Honorable Minister. Sir, on behalf of my senior colleague, Srimati Nirmala Sitharaman, I rise to move that the bill to amend the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountants Act 1959, and the Company Secretaries Act 1980 be taken into consideration. Shri M.K. Vishnu Kumar ji. Thank you, Mr. Chairperson. I first of all thank my leader, Srimati Sonia ji, Sri Rahul ji, for permitting me to speak on this bill. This bill is all about the Chartered Accounts, the Cost and Work Accounts, and the Company Secretaries Amendment Bill. See, at this juncture, I want to recollect one quote by Charles Scott. He said, "Creativity is great, but not in the accounts." See, life is full of balance. World is full of balance. To achieve this balance, we are having these chartered accounts, and their nobility and the wisdom of these chartered accounts have brought India up to this kind of level in economic and environment. See, this bill says, because of the economic and corporate climate change, we are introducing this bill. That is what given in this amendment act. I would like to know what is the economic and corporate climatic change that is forcing this government to bring this sort of bill. See, this bill circles around about ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, and the Disciplinary Committee. It's one of the arms of this committee, of the ICAI. ICAI was formed in 1949. It was passed in the Parliament, and it is a statutory committee body. It is an autonomous body, but still controlled by the Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs. But there is no funding by the government. It is a mass institute. It is not like IIT or IIM. It is a class institute. Several lakh students are being promoted as a chartered accounts every year. It has got around 40 members, these ICAI. Out of 40, 32 are from council members. They are chartered accounts. 8 are from the government nominees. Still, before 10 years, there was no interference from the government. What is the need of ICAI? Why it has to have a disciplinary committee? The disciplinary committee has 5 members. Initially, now they are having 3 members from the council. They are chartered accounts. And by default, the president of the disciplinary committee is the president of the administrative committee, ICAI. The duty of ICAI disciplinary committee is to get the complaints, like from SIBI, from the banks, from the corporates, from the shareholders. Even you and me can go and complain in ICAI about any problem, misconducts in the ICAI and Institute of Cost Accountants and Company Secretaries. Of course, this committee, disciplinary committee, will listen to all the problems, will scrutinize the merits and demerits of the case, and try to give the punishment and award the punishment accordingly as early as possible. Of course, I do agree. This government is keen in disposing the cases early. I appreciate. We also appreciate. But at the same time, why the interference from the government is so much that earlier the disciplinary committee has only 5 members. Out of 5, 3 are from the ICAI, 2 are already in the government nominee. See, 8 years, 10 years back, there was no interference from the government. But later on, 2 government nominees has to be appointed, was the amendment. And so the ICAI also happily agreed to keep them on board with the 2 government nominees. And now, the government says independent, and appointing one more. That is, they are increasing from 2 government nominees
to 3 government nominees of disciplinary committee. Where is the justice? Where is the independence? Where is the freedom? Where is the independent evaluation of the case? The members, and ironically, one more important point we have to note. The president of the disciplinary committee has to be from the government nominee. Where is the justice? Where is the justification? See, the Medical Council of India, Dental Council of India, Bar Council of India. They are all the professionals. In Bar Council, an engineer cannot be the president, a disciplinary committee. In Medical Council, a lawyer cannot be a disciplinary committee president. See, he decides the case. He awards a punishment. Of course, there's a delay. It will be expedited, no doubt. But where is the freedom for the committee to function? See, the cases are given by SEBI, not in other institutions. They are given by the SEBI, the IT department. What is the nature of the case? Is there any violation in the account standards? Is there any violation in the audit standards? Is the company following the Company Act, IT Act? Is the expenditure is overwritten? All those things can be, it's a fact-finding committee. You need to have a professional persons. It is a quasi-judicial. You cannot simply appoint, government cannot arm twist the body by appointing more in numbers, so that out of 5, 3 are from government nominees. Where is justification? Where is the freedom? This government claims everything to be free, independent. Before and all, OMG is oh my God expression. Honorable Chairperson knows OMG, oh my God. But now, ordinary citizen says OMG means opaque Modi government. There is no transparency at all. Everywhere the government wants to interfere. See, India, this Indian democracy is very strongest and the largest democracy in the world. Some certain institutions have to run freely. There should not be any domination or arm twisting or muscling by the government. What is the need? What is the climatic change? You are telling about the environment, you are telling about the economic and the corporate change. What is the compulsion for the government to bring one more member from 2 to 3? You are increasing the number. And also the president of the disciplinary committee should be from the government nominee. What is the justification? Why you are not allowing the people to function independently? This is a very important problem. If this bill is being passed today, this will be a black day for the Chartered Accounts of India. One more thing. Ironically, the standing committee, see, already there is a ICAI, Institute of Chartered Accounts of India. Now, another committee called the Indian Institute of Chartered Accounts can be convened. This is a recommendation by the standing committee. It is a mass institute. It is not a class institute. Several lakh people are being, see, the certification powers are given to ICAI. When you are going to dilute it, 7 lakh students, see, when you are going to dilute the powers of ICAI, what is the need? Why the government has to give another parallel body called the Indian Institute of Chartered Accounts? It is not fair at all. See, Piyush Goyal, Harish Salve, they are all from the members of the ICAI. See, our honorable member sitting in front of me, he is also a member. Mr. Premchandran, I do not know, he is a lawyer. See, MD Gupta, Rajya Sabha MP, AAP member. I don't know why you are looking at me. You must be a member. See, all the powers are being diluted. See, this should not be permitted. If this house is deaf and mute in this issue, then we are doing injustice to our conscience. The wisdom and the nobility of the Indian Chartered Accounts people should be held high. It should not be diluted. What is the need for the government to introduce this bill at this point of time? What is the why the government says another parallel? And one more thing. This government claims it is for the poor people. It's a very important subject in this bill. What the government says, it can include another chapter to provide for a separate chapter on registration of firms with the respective institutes and include firms under the purview of disciplinary mechanism. And also, very important, to provide for autonomy to the council of respective institutes to fix the fees. See, for medical, you have to spend in lakhs. For engineering also, you have to spend little more. But for
chartered accounts, few thousands. But here, the government is giving autonomy to the institutes to fix the fee. Where is the justification? Honorable member, honorable chairperson, I sincerely submit, even the members from the treasury branch also should think with the conscience. See, if the institute started fixing the fees, if the government is giving full autonomy to the institutes, then where is the limit? Where is the ceiling? Where the poor people, even though they are competent enough, they are qualified, how they can get this education of chartered accounts? These things should be considered, and I strongly, the Congress party, strongly object the introduction of this bill, sir, and this bill should not be passed, and let the Honorable Minister give a comprehensive bill. If the deed is so important, let them come with a comprehensive bill where the fee structure is revised, where there is a ceiling, and the governance, the disciplinary committee members should not exceed these members of the ICAI. The council members should exceed the government nominees, otherwise the balance will not be met, and thereby the downfall of our country as far as the chartered accounts will begin. So we should vehemently oppose this bill, and I thank you very much, sir. Thank you. Shri Subhash Baharia ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेंडमेंट बिल, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अमेंडमेंट बिल, कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट अकाउंटमेंट बिल 2021 के समर्थन में बोल रहा हूँ। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट देश में एक जो ये तीनों प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रतिष्ठित प्रोफेशन है और इनकी अपने देश में ही नहीं विश्व में भी प्रतिष्ठा है। और आज विश्व के अंदर भी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, मान्यता प्राप्त है। तो ये इसकी जो विशिष्टता है यह बनी रहे, और इसीलिए यह अमेंडमेंट के बिल अमेंडमेंट है। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में 1959, 2006 और 2011 में अमेंडमेंट हुए थे। ऐसे ही कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट में 2006 और 2011 में हुए, और कंपनीज एक्ट में 2006 और 11 में, इसमें कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में। तो ये अलग अलग अमेंडमेंट स्थिति के अनुसार जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जाता है, तो समयानुकूल कानून में परिवर्तन जरूरी है। और इसी कारण से यह क्यों यह बिल आएगा महोदय जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय जी, तो क्यों, तो ये बात है, मैं कोट करना चाहता हूं। 1 जुलाई 2017 चार्टर्ड अकाउंटेंट डेज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहां संबोधन किया, उसका जो उन्होंने बोला वो कोट करना चाह रहा हूं। कोट, आई कोट, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू मोर डाटा, आई वांट टू पुट माई थॉट बिफोर यू, सीए ब्रदर्स, a person or a client pay tax only when the environment around him is conducive, which motivates him to pay the tax honestly. If he sees that the advisor himself is asking him to hide the truth, then he will boldly traverse the wrong path. Thus, it is equally important to identify such wrong advisors and take strict action against them. And for that, you also have to take tough steps. CA is an arrangement in which human resources development is done only by you. Curriculum is made by you only. You conduct the exam, rules, regulations are also made by you, and your institute only punishes the culprits. Now the question arises, there the temple of
democracy in Parliament of India, which is the voice of 125 crore countrymen that time. He has given so much authority, then why is it that in the last 11 years only 25 chartered accountants have been prosecuted? Did only 25 people make a mess? And I have heard then more than 1,400 cases is still pending for many years now. A single case takes years to settle. Tell me, my friends, it is a matter of concern or not for such highly qualified professionals. Unquote. महोदय जी, आज जो जैसे हमारे सामने वाले अभी मित्र बोल रहे थे कि यह इंडिपेंडेंट जो है कि इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। महोदय जी, 5 डिसिप्लिनरी कमेटी में मेंबर बनने हैं, 5 में से 2 मेंबर काउंसिल के और 3 मेंबर जो बनने हैं वो भी रिकमेंड जो पैनल होगा वो काउंसिल के द्वारा रिकमेंड होगा, सरकार अपने आप नहीं। तो इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि भाई गवर्नमेंट जो पैनल काउंसिल बना के भेजेगी और उस पैनल में से ही उनको प्रेसिडेंट लेना, उस पैनल में से ही मेंबर्स सदस्यों को चुनना। तो ये अपन नहीं कह सकते कि भाई इसमें जो इंस्टीट्यूट है, जो काउंसिल है या उसकी ऑटोनॉमी पे उसकी जो स्वायत्ता है उस पर फर्क पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेंबर बन रहे हैं जो वो उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से पैनल में से ही सरकार बनाएगी। सरकार उस पैनल के बाहर से मेंबर नहीं बना सकती, यह कानून में प्रावधान है। तो इसलिए यह कहना, पर इसके क्यों अपने को ऐसे है, क्योंकि इसमें 3, 4, 5 विशेष कारण है जिसके कारण ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं। सबसे पहले तो जैसा बता रहे थे डिसिप्लिनरी वाला, महोदय जी, इसमें वास्तव में जो कहीं गलतियां हुई और जहां सीए ने गलती की पर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन में काफी डिले हुआ। यह मैं भले ही एक मेंबर हूं और मेंबर के बाद बोल रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर हूं इंस्टीट्यूट का, लेकिन जो डिसिप्लिनरी प्रोसेस है वो काफी लंबा समय लेने वाला। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा यह तय किया गया कि डिसिप्लिनरी जो प्रोसेस है वो 1 साल में यानी 365 दिन के अंदर पूरा हो जाए। यह जरूरी है, नहीं तो यह हालत हो रही। इसमें क्या था, पहले प्रावधान का कोई भी कंप्लेंट डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास आती थी तो डायरेक्टर पहले यह देखता था कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है, और उस राय को बनाने में उसको 5-5, 7-7 साल लग जाते थे। राय नहीं बनती थी प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है कि ये एक्शनेबल है कंप्लेंट या नॉन एक्शनेबल है, और राय। अब राय की जगह जो डिसिप्लिनरी डायरेक्टर है उसको सीधा अपनी जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी कि भाई ये एक्शनेबल है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो नहीं। इसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया ताकि कोई भी कंप्लेंट, कोई भी स्टेक होल्डर जिसको प्रभावित हुआ, जिसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके साथ कुछ भी हुआ है, अगर वो कोई कंप्लेंट करता है तो उसमें उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वो डायरेक्टर के पास सबमिट करेगा, वो टाइम देगा, उसमें टाइमलाइन एक्ट के प्रावधान में दिया हुआ कि इतने दिनों में उनको सबमिट करनी पड़ेगी, इतने दिनों में रिप्लाई आएगा, इतने दिनों में नहीं आया। अगर नहीं तो अभी तक तो क्या होता था, उसको डिले कर जाते थे कोई ना कोई कारण, पर अब के इसमें जो एक्ट के अंदर ये प्रावधान कर दिया टाइमलाइन का, उस टाइमलाइन में जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है, अगर उस टाइमलाइन में वो अपनी रिप्लाई फाइल नहीं करता है या कोई भी है तो उसको फिर उसको एक पार्टी कर सकते हैं। यह प्रावधान अभी है, क्योंकि जानबूझकर जिसके खिलाफ कंप्लेंट की वो जानबूझकर उस कंप्लेंट उस पे कार्रवाई न हो, इसलिए वो डिले करते थे। वो डिले करने का जो है अब उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, उनको रिप्लाई जो भी उनके पक्ष की रिप्लाई है ही हैज टू गिव दैट रिप्लाई। उसके साथ साथ जो आगे
फिर जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि भाई ये कंप्लेंट है, ये एक्शनेबल नहीं है, तो वो अपने कमेटी के पास, डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास भेजेगा और वो उस पर डिसाइड करेंगे कि क्या ये है कि नहीं। और अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो वो वापिस उसको डायरेक्टर के पास भेज सकते हैं। और एक सबसे बड़ा लकूना पहले था कि मान लो किसी सरकारी अधिकारी ने कोई कंप्लेंट की कि भाई ये जो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, इसने यहाँ गलती की है, और उसके प्रूफ के साथ अगर वो डायरेक्टर को भेजता है कि भाई ये इसके प्रूफ है, ये गलती की, तो उसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट माना जाएगा। पहले यह था कि पहले वो अगर विद प्रूफ भेजता भी था तो भी उसको पहले ओपिनियन के लिए उसमें चल जाता था, प्रिलिमिनरी ओपिनियन क्या है उसमें चले जाती थी और उसमें टाइम लग जाता था। अब तो उसको उसमें ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही अगर सरकार के किसी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी सरकारी कॉरपोरेशन के किसी भी जो ऑथराइज पर्सन है जिसने विद प्रूफ अगर कोई कंप्लेंट दी है तो वो अपने आप में वो रिपोर्ट मानी जाएगी और उस पर एक्शन होगा। तो ये बड़ा चेंज जो है, इसका कारण ये क्योंकि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं और उससे आज जो मेंबर्स है इंस्टीट्यूट है उसकी ऊपर कुछ सवाल लोग उठाने लग गए और इसी कारण से यह अमेंडमेंट लाना हुआ ताकि ये डिसिप्लिनरी। और उसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया कि किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई चल रही है तो वो उसको पोर्टल पे डाला जाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में है, डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास में है, या उसका निस्तारण हो गया, क्या निस्तारण हो गया, सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल साफ सुथरा के लिए सारा उसको पोर्टल में डालने का प्रावधान इसमें किया गया, ताकि कहीं पे भी कोई न तो किसी के साथ कोई ज्यादती हो सकती है और न कोई जो है जो जिसने गलती की है वो बच सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है डिसिप्लिन का मेजर अमेंडमेंट जो इंस्टीट्यूट हो रहा बात जो है। पर ये आपको फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पैनल जो बनेगा, मेंबर जो बनेंगे कमेटी के, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो नॉन मेंबर जो इसमें सदस्य बनने वाले हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फ्रॉम द पैनल जो काउंसिल द्वारा दिया जाएगा गवर्नमेंट को, वो ही मेंबर बनेंगे। ऐसे के ऐसे ही दूसरा जो एक अमेंडमेंट इसमें और आया है वो आया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तीनों इंस्टीट्यूट के, तीनों का काम करीब जो अलग बात है कि एक में संख्या चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज्यादा है और दूसरी में संख्या थोड़ी कम है, पर सन 2000 में एक एमओयू हुआ था तीनों इंस्टीट्यूट के बीच में कि तीनों इंस्टीट्यूट आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, लेकिन वो एमओयू कागजों पर रह गया, वो कोई लीगल शेप में नहीं आया। तो इसलिए उस कोऑर्डिनेशन के लिए ये अमेंडमेंट इसमें लाया गया है कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी से इंडिविजुअल जो प्रोफेशन है उसके ऑटोनॉमी में कोई फर्क नहीं आने वाला, वो तो अपने हिसाब से एग्जाम करें। क्योंकि आज सभापति महोदय स्थिति एग्जाम जो सीए का पास करना कितना टफ है, इसका उदाहरण मैं देता हूं कि 3 साल तक तो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है और उसके साथ साथ एग्जाम, और एग्जाम का रिजल्ट रहता है 1.5 से 2%। आज इतने सालों में कुल आज नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कुल 3,27,000 है जो अभी मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के। तो इतना टफ एग्जाम को इतना नहीं, तो इसी कारण इसके जो प्रोफेशन की जो है ना मान्यता पूरे विश्व में केवल इसी कारण से है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये मान्यता बरकरार है इसी का ये है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तीनों की जो एमओयू थे, एमओयू किया था तीनों इंस्टीट्यूट ने, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इस बार सेक्शन 9 में ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो वर्क रहेगा वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट के वर्क में प्रोफेशन में इंटरफियर करने का नहीं है। उनका जो काम रहेगा वो कि भाई ये एक प्रोफेशन का जो अच्छा ही है दूसरे प्रोफेशन वालों को मालूम पड़े, वो उसमें चर्चा करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बाकी इंडिविजुअल जो कर रहा है प्रोफेशन अपने आप जो काउंसिल कर रही है, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो अपने हिसाब से एग्जाम अरेंज करेंगे, अपने हिसाब से ही
मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने अलग अलग उनके जो भी नियम है उस हिसाब से करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है आपस में जो है इफेक्टिव कोलैबोरेशन आपस में हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी मोर और वैसे एक ही तरह के हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, क्योंकि वो वेरीफाई करता है, वो ऑडिट करता है, वो सर्टिफिकेशन करता है, इसलिए थोड़ी उन पे ज्यादा होती है। तो ये इसलिए कोऑर्डिनेशन की जो है ये एक जो सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या होता था कि किसी कंपनी के ऑडिट किया, कहीं पे भी सर्टिफिकेट दिया और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में के किसी पार्टनर ने उसको वेरीफाई किया, सर्टिफाई किया, और अगर उसमें कुछ गलती हुई तो केवल जो साइन करने वाला है, क्योंकि इस जो एक्ट के अंदर यह प्रावधान नहीं था कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पे कोई कार्रवाई हो सके, इसलिए जो व्यक्ति साइन करता था वो जिम्मेदार होता था, फर्म नहीं होती थी। इसीलिए एक नया चैप्टर इसमें जोड़ा गया है कि उस फर्म को भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि जैसा जो पार्टनरशिप फर्म का नियम है कि पार्टनर इंडिविजुअल भी लायबल है, फर्म के हिसाब से कलेक्टिवली लायबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से अगर कहीं वो पार्टनर किसी गलत जगह गलत साइन करता है या गलत कुछ सर्टिफिकेशन करता है और वो प्रूव हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी पूरी फर्म की आती है, कार्यवाही पूरी फर्म और उसके पार्टनर्स के खिलाफ होगी। तो यह एक जो उनको बचने का रास्ता था फर्मों में, बड़ी बड़ी फर्मों में, तो इसका जो उस रास्ते को बंद करने के हिसाब से यह अमेंडमेंट किया गया है। एक जो आगे एक ऑडिट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ये सबसे बड़ी बात है, तीनों इंस्टीट्यूट जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार की तरफ से एक पैसा भी ग्रांट नहीं मिलता है। तो कई बातचीत आई थी जो कहते थे कि नहीं साहब इसके सीएजी ऑडिट, तो सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी ग्रांट का पैसा एक भी नहीं है। तो नया इसमें दिया, पहले क्या काउंसिल तय करती थी कि भाई ये व्यक्ति इस कंपनी का, कि काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काफी बड़ा फंड है और वो सारा उनके मेंबर से, उनके स्टूडेंट से, फीस से यह आया हुआ वही है, कोई सरकारी उसमें ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ऑडिट के लिए जो पहले काउंसिल तय करती थी कोई ऑडिटर को, अब जो है वो काउंसिल केवल सीएजी ने जो पैनल बना रखा ऑडिटर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसी में से ऑडिट कर सकेगी। और उसके साथ साथ एक और नियम है कि जो कभी काउंसिल का मेंबर रहा है 4 साल तक वो ऑडिटर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि 4 साल तक क्योंकि मेंबर रहा है। इसके अलावा काउंसिल के इलेक्शन में भी जो पहले 3-3 साल का टाइम पीरियड था और एक मेंबर 3 बार कंटिन्यूस बन सकता था, लेकिन अब उसको 4-4 साल करके काउंसिल मेंबर्स को और उसके पदाधिकारी को 4-4 साल करके और 2 बार का यह अमेंडमेंट किया। इसमें कोई वो विषय नहीं। और एक जो सबसे बड़ा जो इसमें हुआ है कि पहले जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होता था, काउंसिल का जो अध्यक्ष होता था, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वही होता था, काम भी जो है, वर्क भी, सारी जिम्मेदारी उसकी थी। अब इसमें थोड़ा सा पावर सेपरेशन का किया, वो तो एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट जो है वो केवल ये देखेगा कि जो प्रोफेशन है वो एज पर एक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जो प्रशासनिक काम करने के लिए जो सेक्रेटरी है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया, ताकि डे टू डे वर्किंग जो भी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रेसिडेंट, डे टू डे वर्किंग सेक्रेटरी के या प्रशासनिक जो है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेक्रेटरी के पास हो गई और डिसीजिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास, काउंसिल के पास ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं। पर उसको एग्जीक्यूट जो काउंसिल ने निर्णय किया उसको एग्जीक्यूट करना वो जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वो चीफ वो होगा। इस महोदय जी, तो यह जो आज है, मैं भी एक मेंबर हूं और हो सकता है इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं और हो सकता है कुछ साथी नाराज भी हो, लेकिन ये जो अमेंडमेंट आए हैं ये इंस्टीट्यूट प्रोफेशन के हित में आए हैं और इससे पूरा आगे
प्रोफेशन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं महोदय जी, आपके माध्यम से सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती से ही कोई फ्रॉड नहीं होता है, उसमें काफी कुछ होते हैं, बहुत इन्वॉल्व होते हैं। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोषी ठहराना भी गलत है। ये उनके साथ जो है ये बिल्कुल, क्योंकि केवल उसकी वजह से नहीं होता है। और मेरा जो है वादा है इसके साथ साथ, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आने वाली, क्या दिक्कत आने वाली मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, जो बैंक में पैसा जमा कराते थे या कुछ करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने इस कोरोना काल में लगभग 1.5 करोड़ नए डीमेट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग छोटे छोटे इन्वेस्टरों ने 1.5 करोड़ नए। अब ये इनका इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने किया है, इनका कैसे प्रोटेक्शन हो सके, तो मैं माननीय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे ये छोटे निवेशक बच सके। क्योंकि आज की तारीख में 3-4 बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, उसमें PACL है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहारा इंडिया है, इसमें करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए उलझे हुए हैं। और ये पैसा कंपनियों के पास पूरी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, सब है, लेकिन कानूनी लकुनों की वजह से, कुछ कोर्ट की वजह से ये पैसा जो इन्वेस्टर है उनको नहीं मिल रहा है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट आए ताकि बाकी झगड़े चलते रहे, लेकिन जिसने पैसा लगाया है उसका पैसा जिस हिसाब से उसने सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पेंशन का पैसा लगाया, वो वापस उसको टाइमली मिल सके। यह बहुत ऐसा कोई कानून लाना जरूरी है महोदय जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं बस केवल आपके माध्यम से सरकार को, यह एक अच्छा है, पर कहीं न ऐसा न हो जाए जो दूसरों की शंका है कि जो सरकार का उद्देश्य है, मोदी सरकार का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कहीं यह जो अपने इस हिसाब से कहीं इसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखा जाए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ए राजा जी। Sir, Chairman sir, thank you very much for this opportunity given to me. Sir, I used to register my appreciation, apprehension and accusation in mixed manner. Yes, latter part. Some of the provisions are deserved to be appreciated. Some of the provisions create apprehension in the mind of the professionalists and public. And I am having my own accusation against the bill that this government is having some hidden agenda in their mind. Sir, appreciation in the sense, the attempt that has been made to have a legislation to revamp the entire system of profession of chartered accountancy, as the government sensed it, some scrutiny is essentially needed. To that extent, it is deserved for appreciation. What has been said in the state objectives and statement of objectives and reasons, the motto of the bill is, as mentioned in the objectives, to deal with the misconduct by the institutions. What are the institutions? Indian Institute of Chartered Accounts and Indian Institute of Cost Accountant, Indian Institute of Company Secretaries. These three bodies are created under a separate and distinct statutes. Whether I can appreciate the government or I can express my apprehensions, the first time I think, to my knowledge, three individual and separate and distinct institutions created under a separate, distinct identities and created under different statutes have been corrected by a single legislation. It is unknown to the jurisprudence, unknown to the legislative
ethics. The procedure that has been adopted by the government is completely unknown to the democratic norms of this House, legislative competency of this House. That has to be expressed to the Minister first. Sir, government has come up with the legislation to deal with 3 different branches, different institutions created under the different statutes. However, it is workable. That has to be discussed at length in this House. However, my speech will be very brief. Sir, I do not want to take more time. Sir, the bill was already discussed in the Parliamentary Standing Committee and the recommendations came up. I think that all the members of the Standing Committee from the different parties must have expressed their views, and I hope all views expressed in the committee meeting should have been incorporated in the bill. In spite of the deliberation took place in the Standing Committee, there are so many anomalies in the bill. I will list out 1 or 2. Sir, by passing the bill, the appreciation deserved, what I said is, by passing this bill, first time we are having a multidisciplinary body, mechanism. Multidisciplinary practice and mechanism. What is meant by multidisciplinary mechanism? You are including not only chartered accountants, not only non-chartered accountants, you are including in this system advocates and other professionalists, even engineers, architects, all are included in this system to revamp the entire chartered accountancy. That is a good attempt. Whether it is going to deliver the tangible results or not, altogether different. Notwithstanding the outcome, the attempt that has been made to synchronize all the statutes by way of creating a multiple disciplinary forum or body or practice is really deserved for appreciation. But let us leave to the natural course when it is applicable to the when was applied on the ground. Sir, for these reasons, the reason behind the multidisciplinary practice will provide integrated services from both CA and non-CA, as I put it earlier. Because of this, other communities like lawyer, engineers and architects will be benefited not only in the terms of professional experts, in terms of financial aspects also. Sir, I do appreciate one more thing. The first time when you are enacting the legislation, the legislation, so far all the legislations, namely 3 legislations for chartered accountant and cost accountant and company secretaries, 3 legislations, starting from 1956, 59 and 80 respectively. All these legislations focused only for the chartered accountants and company affairs and the cost benefit analysis. But first time, non-audit professions, non-audit skills, which is essentially, maybe a little bit remotely, but essentially needed in the system, that has been inducted by way of this legislation. That has to be appreciated. For all this reason, I am having no reservation to extend my support to this bill. But still, I am having my own issues. I will express my accusation and apprehension now. Sir, my friend Vishnu Prasad from Congress has expressed beautifully that what are all the anomalies available in the bill. The one is disciplinary committee. The second one is coordination committee. As you put it rightly, the entire entity of the body, disciplinary committee, has been changed, not only physically, in the letter and spirit, and the delivery system also completely diametrically opposite with the existing system and the already existed system. So, rightly he put it, earlier 2 government nominees, 3 chartered accountants, totally 5 members. Chairman was chartered accountant. Now, only 2 chartered accountant and 3 non-chartered accountant, even that can be digested. But what is surprise and shock is, the chairman will be the non-chartered accountant. My friend rightly said, for advocates, Bar Council of Chairman will be advocate. Medical Council, Chairman will be doctor. Chartered accountant, you are having non-chartered accountant. What type of justice is being delivered? Sir, in law, I do admit, no one can be a judge for his own cause. That is applicable to individual. I cannot be a judge for my own case. It has to be given to you or somebody else
to maintain the neutrality. But whereas the professions is concerned, justice has been delivered only by the same identical professionalist. A man who practices law can interpret law and deliver justice. A man who did practice in medicine, he can give advice for medicine. Domain knowledge. Now you are transporting a alien, complete alien, to some body. That is why saying not only the autonomous of the body is compromised, or autonomous of the body is not only compromised or diluted or mitigated. My accusation is you are having hidden political agenda to kill some institution, to kill some companies. Otherwise, such an attempt should not have been done. Similarly, coming to the coordinating committee, not only, sir, before, as Vishnu Prasad rightly said it, a man who is supposed to be the chairman of the Chartered Accounts Committee's, Disciplinary Committee's chairman, he must know the nitty-gritty of the accounting standard. He must know the very micro-level knowledge in auditing standards. Accounting standards, auditing standards, even one step I can go further, even ethical standard is there. All these standards must be weighed only by a professionalist, namely CA. But you are putting a non-CA and wanted to measure the accounting standard, auditing standard and ethical standard. It is not practically possible. That is why I am accusing you are having some hidden agenda. Coming to the coordination committee. Coordination committee, also there is a problem. You devise the terms and conditions for the coordination committee. So the coordinator committee must be confined within the terms and conditions. You just have a perusal. Any ordinary, reasonable and prudent man, it does not need any rich knowledge. Any ordinary, reasonable, prudent man can peruse the line, terms and conditions, and can say the terms and reference now device is traveling beyond the terms and reference. That is why I am having. The present president of the Chartered Account Association Institute, they express their apprehension that government is having some hidden agenda. It is not fair on the part of the government. So for these reasons, disciplinary committee and coordination committee attempt that has been made with malicious intention to kill somebody, to kill some institute, even it may be politically motivated. That is a hidden agenda. I do sense it. Please, to that extent, you must have courage to withdraw the bill, amend the bill, or let it be referred to the another committee, select committee, cutting across the political parties members can give their ideas, then let it be piloted before this House. With these words, I commend this bill. Thank you. Select. Shri Saugataraji. I rise to speak on the Chartered Accountants, Cost and Works Accountant and Company Secretary's Amendment Bill 2021. This bill was brought to Parliament in 2021 December. It was referred to the Standing Committee, of which Mr. Jayant Sinha is the chairman and of which I also happen to be member. The Standing Committee has by and large, it has more or less endorsed the bill. But the Standing Committee mentioned certain things which the ultimate bill has not followed. What is it? The Standing Committee mentioned that the autonomy of this institute should not be hampered. Yes, regulation is to be ensured, but in making regulations, you should not throw out the baby with the bathwater. And that is what has happened. The bureaucrats in the Corporate Affairs Ministry have increased their stranglehold on these three independent professions through this bill. Why? Now they are saying that there will be a coordination committee consisting of the three types of professionals: chartered accountants, cost accountants, and company secretaries. And it will be headed by the Secretary, Corporate Affairs. The bill aims at bringing discipline to the professions. But the disciplinary authority will be headed by a non-chartered accountant. And the disciplinary committee
would have more non-CA members than CA members. Sir, this is what this government is doing generally. You know, earlier there was an elected Medical Council of India. They dismissed that. Now they have got National Medical Commission, all appointed people. They want to take away the power of all professional bodies, medical profession. Then Bar Council power they will slowly take away. They are taking away the power of these professionals. I do not say that these professions are perfect. We all know that chartered accountants, these institutes, have purposely limited the number of pass-outs. If the pass-outs are less, then the scope of jobs is more. And I do not know of any chartered accountant who is unemployed. The chartered accountants sign everything from balance sheet of schools, NGOs, companies. The Prime Minister has mentioned that your signature is more important than ours, because if the chartered accountant signs the balance sheet of a company, it means it's sacrosanct. Now, the chartered accountants have not been ideal in this respect. We all know of Satyam Computers, very famous audit firm of India was engaged. Satyam was showing its shares at an inflated value. It was found that there's total wrongdoing by the chartered accountant company. And recently, you know, ILFS, Infrastructure Leasing and Finance Corporation, they were also caught with their hand in the till, and they are also chartered accountants have failed. I know that there is need to control, bring some discipline to the chartered accountants, but it cannot be ensured by giving more power to the Corporate Affairs Ministry. The mechanism within the professions has to be strengthened. And that's why I think that in spite of whatever the standing committee mentioned, it has not gone by the recommendations of the standing committee. Standing committee very specifically said, Mr. Jayant Sinha mentioned that we should not take away the autonomy of this institute. Why have the government taken away the autonomy of the institute? It's all right, smaller things. You increase the term of the council from 3 years to 4 years. You enhance the penalties, fines in case of misconduct. But this amendment, hence, has become self-defeating. Of course, I know that the chartered accountants are great lobbies. Earlier also, such a bill came, but they lobbied. Do not put more restrictions on us. They were successful. But in order to control their lobbying, this is not the way that has been shown. I am against. The panel has said the government should consider setting up an Indian Institute of Accounting, akin to IITs and IIMs across the country for enhancing the development of accounting and finance profession. Good idea. Government has not accepted it. The observation was made. The parliamentary panel also suggested that multiple bodies, as is the norm in advanced nation, are required to promote healthy competition and raising the standards and improving the credibility of financial reporting and auditing in the country. The Prime Minister himself said that chartered accountant's signature is more important than that of the Prime Minister. So he proposed what is already there in the Companies Act, that National Financial Reporting Authority. मैं बताऊं आपको, तो आप तो इंटरेस्ट दिलचस्पी लेते हैं ये सब बात में, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं।
ये सुनिए, I am quoting from Business Standard, 2017, 26 July. The PM Narendra Modi has been particularly keen on curbing corruption and the black economy, and almost all his speeches have stressed on the big and small changes needed to make India less corrupt. Much attention has been focused on the financial rectitude of businesses in India. The goods and services tax. Now, the Prime Minister mentioned that the demand for NFA is not a new one. The Companies Act of 2013 already provides for such a regulatory body. Yes. And the Prime Minister himself said that your signature is more important than mine. Where is that statement? Yes. I'll tell you that statement was made by the Prime Minister while he was inaugurating the GST Council. हाँ, 2017 में दोनों हुआ. प्राइम मिनिस्टर ये बोला. मैंने आपको कहा सर कि कोट करिए ना कहाँ बोले वो. वही तो ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, छोड़िए आगे चलिए. अच्छा, ये सुनिए ना. Dada, don't get distracted. Sir, सुनिए, very please go ahead with your thing. The PM highlighted. However, the institute has been found wanting in acting against its errant members on many occasions, a fact highlighted by Mr. Modi himself. Speaking at the ICAI Foundation Day, he told chartered accountants that their signatures were more powerful than that of the Prime Minister and asked them to introspect and improve their standard. The PM also highlighted the ICAI's embarrassing disciplinary record, wherein only 25 errant auditors have been prosecuted over the past 11 years and 1,400 cases were pending. This was reported by Business Standard 26 July 2000. You need a copy? मैं उनको copy दूँ क्या? नहीं, please don't. सही चलेगा. अब पढ़ो ठीक से. आपके प्रधानमंत्री ये सब बोलते हैं. दादा, you address the chair. विरोध करते हैं. You are getting distracted. I'll slowly, sir. Please go ahead with your thing. I'll slowly wind up. Sir. Yes, I'll yield always. You're a Harvard-trained man. I must yield for you. Jayanji, please. Yeah. Honorable member has taken my name. Unfortunately, it's in vain. He has alluded to the role of the chairperson of the standing committee. There are many other distinguished members here in Parliament who are also chairpersons. And the honorable member, who's been a member of many of these standing committees, knows full well that any report given by a standing committee is not the report of the chairperson, and his name should therefore not be taken in vain. It is the considered consensus view of all honorable members in that committee, including the honorable member himself. So I would request him to speak about the standing committee, not about an individual. I don't think that would be appropriate. Yeah, thank you. That's fine. It was not his personal. Dada, please, you go ahead with your thing. Don't get distracted. Sir, and please go ahead with your thing. That's why I say, as Mr. Raja suggested, that we must have a special committee on this report of the standing committee. Because the report of the standing committee has not been followed. The government has been intent in its purpose of increasing the stranglehold of the corporate affairs ministry bureaucracy on the independent profession of chartered accountants. This is not to say that chartered accountants do not help in setting up shell companies. This is not to say that they are, at many times, they are complicit in the acting of the firms, especially shell companies. But this is also to say the choice is not between the baby and the bath water. You can't throw out the baby with the bath water. So please, I'll urge the government, please give some leeway, some independence, some autonomy, and improve the disciplinary mechanism by all means. Bring in people from outside to judge the chartered accountant. I do not agree with this theory of domain knowledge, that only chartered accountants can deliberate on the misdeeds of chartered accountants. If there are, non-chartered accountants can also deliberate on them. With that, sir, I'll again recommend to the government to have a fresh look
instead of going by the report of the bureaucrats of the Corporate Affairs Ministry. Thank you, sir. Srimati B. Satyavati. क्या हुआ? वही लिखा था. And first of all, I stand here to support the bill from YSR Congress Party under the dynamic leadership of our Honorable CM Garu, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Chairperson, sir, I would like to thank the government for bringing this much needed amendment. Several audit failures have resulted in a number of cases that seriously affected the economy, including the recent non-banking finance companies NBFC's crisis. The National Financial Reporting Authority NFRA report on the ILFS crisis is testament to the mismanagement. It found several audit failures in crisis-ridden ILFS Transportation Networks Limited, ITNL. Honorable Chairperson, sir, the Amendment Act is necessary and provides for several measures to bring the House in order. Such measures include provisions for speedy, time-bound disposal of cases and strengthening of the disciplinary mechanism, amongst others. The Act also provides for increased roles for the 3 professional organizations, including Institutes of Chartered Accountants of India, the Cost Accountants of India, and the Company Secretaries of India. Chairperson, sir, here I want to bring some positive points about the bill. One is time-bound disposal of cases. The Amendment Act sets out specific time limit for disposal of inquiries by Board of Discipline and Disciplinary Committee. And the second one is disciplinary action against CA firms. Currently, Chairperson, sir, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, can only initiate action against its members. However, with the amendment, the ICAI can not only take action against the individuals, but also against firms for lapses and professional misconduct. Thus, Chairperson, sir, the Amendment Act certainly widens the scope of disciplinary action to deal with the inclusion of a member in his individual capacity or as partner or owner of the firm. And the third one, setting up of coordination committee. The amendment also provides for setting up of a coordination committee consisting of the President, Vice President, and the Secretary of the Council of each of the professional organizations, Institutes of Chartered Accountants of India, the Cost Accountants of India, and the Company Secretaries of India. The committee will have an important role in overseeing the development and harmonization of the professions of chartered accountants, cost accountants, and company secretaries. Further, the Act also provides for specific functions for the coordination committee. And the fourth point is, it increases penalty for falsely claiming to be a member of the institute. The penalty for falsely claiming to be a member of the institutes has been increased, which would help in curbing fraudulent cases. Further, the manifold increase in penalty and provision for imprisonment would act as a necessary deterrent against fake professionals. Honorable Chairperson, sir, and there are few suggestions. One is increase of non-CA members in disciplinary committees. The provision that the ICAI shall recommend all names in the disciplinary committee is a good step. However, many people have expressed concern over the reconstitution of the disciplinary benches, whereby it now mandates the appointment of 2 CA and 3 non-CA members as part of the disciplinary committee. Further, one of the non-CA members would act as the presiding officer. Chairperson, sir, CA members with their expertise and domain knowledge should be given preference in disciplinary forums for better and speedy disposal of cases. Thus, it's our humble suggestion to the Minister Ji that the strength of CA members would be increased in the disciplinary forums, and further, a CA member should act as the presiding officer.
Before I conclude, Honorable Chairperson, sir, I believe overall that the amendment is a step in the right direction. It will further make the functioning of ICAI more cohesive and would indeed strengthen the corporate governance, audit quality, and reporting of key statutory documents in the country. Thank you very much. Thank you. Nishkant ji. सर, चेयरमैन सर, जब हम प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति को कोट करते हैं और ये सीनियर मेंबर सौगत बाबू जैसे लोग कोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें रेस्ट्रेन उनको होना चाहिए। जो उन्होंने पेपर दिया सर, हाउस को इन्होंने मिसलीड किया। प्रधानमंत्री जी का जो अगला वक्तव्य था सर, वो वक्तव्य यह था कि द पीएम ऑल्सो हाईलाइटेड दैट ICAI's embracing disciplinary record, wherein only 25 errant auditors had been prosecuted over the 11 years and 1400 cases were pending. प्रधानमंत्री ऑडिटर को कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करो, और तुम जो गलती कर रहे हो, तुम जो सजा नहीं दे रहे हो अपने मेंबर्स को, ये गलत कर रहे हो और इसी के लिए ये किया। तो मुझे लगता है कि सौगत बाबू को मिसलीड नहीं करना चाहिए, देश को मिसलीड नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरा ये इतना ही सबमिशन था सर। श्री राहुल शेवाले जी। Thank you, Chairman sir, for giving me this opportunity for expressing my views on Chartered Accountants, Cost and Work Accountants and Company Secretaries Bill. Chairman sir, there are several countries where the dual model of accounting institute exists, such as Canada, USA, UK, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka. In none of these countries, confusion has been created by existence of two titles, and both CMAs and CAs coexist in harmony rendering service to the society. Such a good practice of the word can also be certainly practiced in India, and no confusion can be caused by changing name. In line with the same, till the year 2011, when Congress government was there, all was said and done for change of the name of our institute to the Institute of Cost Management and Accountants of India. But unfortunately, at the last moment, the words and management were not incorporated and the words and works were removed. It is a known fact that this occurred on objection from the Institute of Chartered Accountants of India to include the word management, although they have no locus stance on the affairs of our institute. Because of this, there is no level playing field to cost and management accountants in India and also abroad who can establish their firms abroad, but due to recognition issues, they are suffering very badly on this. Chairman sir, in clause H45, the fifth report of the standing committee on page 28 and 29 clearly states the change of nomenclature of cost and works accountants to cost and management accounts. In the standing committee report, it was stated as the Ministry of Corporate Affairs may consider suitable change to the nomenclature of the institute as per international practice and benchmark. It is observed that the ministry is ignoring the demand of cost accountants for more than 3 decades, and despite of this standing committee on finance recommending, the earlier standing committee also recommending the same. Sir, I urge the finance minister to consider my humble request. Chairman sir, when any act is drafted, it is expected that no disputes will occur in the same. It is bound to have some disputes, and hence precisely dispute resolution mechanism are created. In clause number 21, 56 and 89 in the Act prevents complainants from withdrawing complaint. In any of the Acts, such a prohibition of withdrawals is not found elsewhere. This will unnecessarily increase the burden on the judiciary and the disciplinary mechanism of this institute. Sir, wastage of time and money will also be there, and other genuine cases will suffer because of this. Such provision preventing complainant from withdrawing complaint must be removed, and one should be allowed to withdraw the same without any hassles. It is the fundamental rights of any individual to withdraw the case filed by him or her in case of he or she thinks that the purpose of filing case is fulfilled.
Chairman, sir, as per suggestion F on page 26 of 25th reporting of a standing committee, suggestive of establishing Institute of Accounting, IIMs and IITs, when government will consider the IIM, yes. When government will consider the proposal, and what is the timeline government has in its mind to decide on this. My 4th point is the Quality Review Board, as mentioned in clause 32, 67 and 100 states, for a Quality Review Board to file disciplinary complaints, which is not correct. Review Board is meant for giving suggestion and improve quality of audits and auditors and their firms. If they start filing complaints, then their orientation of works will change and drastically, and also QRB will not be welcomed by auditors, their firms. This will create disharmony and distrust between QRB and others. Sir, I requested to the Finance Minister to kindly consider the dropping clause, the 32, 67 and 100 from the above bill. My 5th point is in clause 22, 23, 57, 58, 90 and 91 stipulated timeless for inquiry by the disciplinary committee and a disciplinary board. We have seen failure of insolvency and bank corruption law for following timelines given by the courts. Here again, we are pushing these disciplinary authorities to give the judgment in specific days, which is not at all correct. The timelines which has been given does not have any study taken up by the ministry, and these timelines are bound to fail. Hence, it is proposed to remove the timelines given in these clauses, or if government is adamant that at least these timelines must be increased by minimum 60 days in clause 22, 23, 57, 58, 90 and 91. Chairman, sir, my last point is in the same clause 22, 23, 57, 58, 58, 90 and 91. There are procedures which are mentioned to be followed by the Director, the Discipline, Board of Discipline and Disciplinary Committee. It is suggested to drop these clause from the main act, and Ministry can bring rules regarding disciplinary procedure. Currently also there are separate rules for disciplinary proceeding, which offers flexibility to Ministry and Government for this easy modification if needed. Hence, it is proposed to drop clause 22, 23, 57, 58, 90 and 91. Also, these provisions lack natural justice to the complainant and respondent by not providing them any opportunity to file rejoinder. Thank you, sir. Thank you. Shri Kaushaledra Kumarji. सभापति महोदय, आपने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म, लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने एवं मामले को त्वरित निपटाने सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इसके माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959 तथा कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह बिल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों एवं कंपनियों के संचालन को नियंत्रित करती है। अतः संस्थान में अनुशासनात्मक तंत्र मजबूत हो और संस्थानों को गति मिले, यह जरूरी था। इससे सभी कार्यों के लिए एक सीमा निर्धारित किया जा रहा है। संस्थानों में प्रशासनिक और अनुशासनिक शाखाओं के बीच कोई हित का टकराव न हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। वैसे यह तीनों संस्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म, लेखापाल, कंपनी सचिव एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी पूर्ण स्वायत्तता बनी रहे। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि स्वायत्तता संस्थान की स्वायत्तता में सरकारी दखल से संस्थान की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, वह नहीं होना चाहिए। इन तीनों संस्थानों की कार्यकलापों
को रेगुलर समीक्षा होनी चाहिए और सुधार के उपाय होनी चाहिए। इन तीनों संस्थान में मुख्यतः चार्टर्ड अकाउंटेंट का महत्वपूर्ण रोल है। करप्शन को रोकना यह अहम भूमिका रहती है। यही अकाउंटेंट करते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। अतः इन सभी तीनों संस्थानों की स्वायत्तता बरकरार रहे, यह मेरा पुनः आग्रह है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री बी महताब जी। Thank you, Chairman, sir. It's my privilege that when I'm speaking, you are in the chair. Thank you. And the Minister, Finance, Corporate Affairs had introduced this bill, and today we have our friend here also piloting this bill. There are some specific issues which needs to be cleared or clarified. The statutory monopoly that was provided to certain organizations or institutions earlier is now being changed. It's a good thing or it's a bad thing or it is just a normal thing in the present circumstances, that is something which future will tell. But there is a conscious decision that statutory monopoly of certain organizations are now being changed, and government intervention has become a necessity at some quarter. That is why these changes are occurring. Why you are doing it? That is a question which we have to corroborate, whether in other parts of the world these things are happening or not. And I think my friend from Shiv Sena mentioned about certain countries where these changes have already occurred, especially the developed countries where these changes have already occurred. Coming to the bill that is before us today, I would say there are 4 or 5 points in the background which we should always understand. Over the years, the government has taken various measures to curb possible corporate misdoings. Some have also mentioned the names of those corporate bodies. In recent years, the role of some chartered accountants has also come under regulatory scanner. The move to reform the disciplinary mechanism of professionals is part of effort to improve corporate governance and the quality of preparation of reporting of key statutory documents. Chartered accountants play a key role in the preparation and audit of financial statements, while company secretaries play a role in meeting statutory compliances. Cost auditors are vital in sectors where use of resources and energy needs close monitoring and have a bearing on the business competitiveness. Auditors, accountants, and company secretaries are considered as the first gatekeepers of corporate governance, on which the legal framework lays trust. The government is keen, I believe, to address the gaps in the self-regulation of professionals by the 3 institutes. Sir, you have very correctly put forth and very succinctly also have put forth. There are certain things which needs to be appreciated. There are certain apprehensions which are also there. And there is a need to make certain corrections, if I remember your speech correctly. You said acquisition. I said corrections. That's why I said corrections. Sir, the bill, the key features, I need not go into the details of the key features, but most of it. But I think the first and foremost key feature is the bill proposes a time limit on resolving the cases under investigation. There are a number of other issues, and I need not go into those. But while analyzing the bill, the new provision has been introduced to prohibit a chartered accountant firm from practicing up to 2 years, or to cancel its registration for any period, or to impose a penalty maximum up to 50 lakhs of rupees, where a partner or owner has been repeatedly found guilty of misconduct within a period of 5 years.
These changes are very harsh. Removal from membership even for one day destroys the life of a chartered accountant professional because of the break in membership, which plays a crucial role in getting future assignments. While stronger penalties and punishment will act as a deterrent, it may also dissuade chartered accountant professionals from joining together to form bigger audit firms that can match the scale and size of the firms affiliated to international firms like PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, and the EY. Majority of non-CA members in the committee can pose challenges to litigants when the subject matter in litigation would mostly be analyzed with reference to the domain knowledge of chartered accountants, and in the process reduce the new composition as a bureaucratic hegemony. The amendment makes it impossible for audit firms to escape accountability for misdeeds by any of its partners, even after removing the guilty partners from the firm. Such a legal provision is from an unfortunate and unkind assumption that all other partners in an audit firm are complicit with the one who is accused of professional misconduct. Sir, the Standing Committee in its report had made some good suggestions. I need not go into all those details, but I have 2 points to make here. The qualification and licensing of accountants, which my friend had just now mentioned, in United States, in United Kingdom and Canada is done by multiple bodies. In India, ICAI has statutory monopoly power over the whole profession. Thus, the scope for improving the quality and competency of the profession remains limited. I believe multiple bodies on the lines of advanced countries are needed to promote healthy competition and improve the credibility of financial reporting. Setting up academic institutes, as has been suggested by the Finance Standing Committee, for accounting for further development of accounting and finance profession is praiseworthy. Standing Committee also has suggested that the role of head of council and the executive head may be separated, as proposed in the bill, to bring about greater efficiency in decision-making and functioning of the council. So here, I like to mention relating to disciplinary mechanism. I need not quote the clauses, but there are 7 clauses relating to this disciplinary mechanism. Clause 22, 23, 57, 58, 90, and 91, about which it was said. But here I would like to draw the attention of the government through this House, sir. In the statement of objects and reasons of the bill, states that it seeks to address the conflict of interest between the administrative and disciplinary arm of the institutes. To achieve this, the bill proposes to change the composition of the 2 disciplinary entities to allow for more external representation. However, these external members will be selected from a panel of persons prepared by 3 councils. Thus, while the bill reduces the role of 3 professional institutes with respect to representation of the Board of Disciplines and the Disciplinary Committee, it continues to rely on the councils for nominating the external members. Note this, that under the current framework, the external members on the Disciplinary Committee of the 3 professions are nominated by the central government independently. Under the CA Act, the central government independently nominates 1 member on the Board of Discipline. It is unclear. That's why when my friend Subhasji mentioned that we have actually brought in more independence into the thing, here the confusion arises. It is unclear how the conflict of interest between the disciplinary and administrative functions will be addressed if the council continues to be involved in recommending who could be on such disciplinary entities.
the confusion still continues. The statement of objects and reasons of the bill states that it seeks to achieve speedy disposal of cases against members of institutes by strengthening the disciplinary mechanism and providing for time-bound disposal of cases. The bill empowers the three councils to constitute multiple boards of discipline and discipline committee. However, the bill allows the central government to nominate the same person as presiding officer or as members across different boards of discipline and disciplinary committee. This may be incompatible with the objective of speedy disposal of cases against members. Appointing the same set of people on multiple boards of discipline and disciplinary committee may prevent these entities from hearing cases of misconduct simultaneously, thereby leading to delay in disposal of cases. Coming to clause 9 of the bill, I would say the bill provides for setting up a coordination committee chaired by the secretary, about which Professor Sogat Rai very vehemently stated his point of view. Secretary of Ministry of Corporate Affairs will be chairing that committee, coordination committee. The to coordinate functions of the three institutes and align cross-disciplinary regulatory mechanisms for interprofessional development. The functions proposed for coordination committee may overlap with the current mandate of the three institutes and the council. For instance, the coordination committee will ensure quality improvement in academics, research, and all related works of the institutes. It will also focus on coordination and collaboration among the professions. These activities are currently undertaken by the respective councils of institutes, council and institutes. As the three institutes also have committees for coordinating among themselves, it is unclear as to why there is a need to set up another coordination council as proposed in this bill. No need. The proposed coordination committee will be chaired by the Secretary of Ministry of Corporate Affairs. This provision may impinge on the independence of the three institutes. Coming to clause 11, 16, 47, 51, 80 and 84. I have a limited point here, sir. The bill seems to be turning the position of the president in the three councils into a non-executive post. The secretary of the respective councils are being designated as chief executive officers. However, the bill holds the respective presidents responsible for implementing the decision of the council. It is unclear how the president will ensure that the decisions taken by the council are implemented. At the same time, the secretary is proposed to carry out the administrative functions of the institute as a chief executive officer. So you make the chief executive officer accountable. Why you are making the president accountable? I fail to understand. That is very much there in the bill. The bill seems to be separating the responsibility for governance and execution by prescribing separate roles for the president and the secretary of the council, but holding the president responsible for implementing decisions, which is an executive role, may be against the framework of separation of powers as proposed in the bill. And the last point that I would like, last clause on which I would like to is relating to the disclosing details of cases being investigated may harm reputations. And this is relating to clause 18, 20, 53, 55, 86, and 88. The bill provides for disclosure of pending complaint or actionable information against members of the institute and firms registered with them. For the three professions, the Board of Discipline or the Disciplinary Committee decide whether a member is guilty of an alleged misconduct. Publishing details of members of firms found guilty or imposition of any penalty may be useful information for prospective and current clients. However, recording details of actionable information
or pending complaint in the register of members and register of firms before they are found guilty will definitely adversely impact their reputation. Regulators of other professions, such as doctors, publish details only of those blacklisted or suspended from practice. According to the National Medical Commission Act 2019, the Ethics and Medical Registration Board and State Medical Council are required to maintain, just 2 minutes, sir, the National Register and State Register respectively. These registers contain details such as the name, address, and all recognized qualifications of licensed medical practitioners, while the Indian Medical Register contains details of doctors who have been blacklisted along with dates of suspension and revocation of suspension if applicable. It does not contain details of complaints against the doctors. Sir, before I conclude, I must say it is important to facilitate a business-friendly environment for corporates as well as professionals in India. It is therefore vital that Indian laws and regulations on professional service keep pace with changing market dynamics. Opening up professional services to competition is necessary, and therefore audit firms should be allowed to advertise with some restrictions. Further, in a global economy, use of international brand names for audit firms must be allowed. We had deliberated in our last Loksabha, 16th Loksabha, on this subject. Laws must be rationalized to promote multidisciplinary practices to allow firms to offer a bouquet of high-quality professional service at par with international standards. The Advocate Act 1961 needs to be rationalized also. I think you will support me in this aspect. Madam, you are making valid points, but let it be brief. Just last 30 seconds. To facilitate development of Indian law firms as well as Indian audit firms into MDPs. Adopting these 3 measures, that is advertising, branding, and multidisciplinary practices, will not only enhance the standard of services offered to corporates, but also facilitate the audit firms to expand in size, in operation, enabling them to compete internationally. Thank you, sir. Thank you. Srimati Supriya Sule. Sir, I stand here to speak on the Chartered Accountants, Cost Works and Accountants and Company Secretaries Amendment Bill 2021. Sir, as I was growing up in school and college, these were professions we always looked up to. When somebody said, my son is a chartered accountant, the first thing is we are complimentary. Oh my God, what a competitive child, must be very bright. And like my friend, glorious profession, you're right. Like my friend Sumati just said while hearing the debate, she said this is a meritorious batch because IIT, IIMs, my friend Jayant Sinha, who also happens to be, who had got admission, IIT, IIM both, and being a chartered accountant are very good professions. So I appreciate the government's effort to bring and discuss this and bring in transparency. I think in this new world, years of technology, professionalism, I think globally this is something we need to do, which is a good thing. But I really don't understand, like my colleague Sagwata Babu also talked about it, Mehtab ji, Raja ji, everybody talked about it, just what is really the need? There are these 3 verticals already doing a good work. If there is their own way of handling their issues, what is the need of bringing this, all of them under one umbrella? Is there a specific reason or an intention? Which methodology is going to make sure there are no mistakes? It's a welcome step. But what is the solution to this? Because in your statement and objects, this is what they have said, that this is to provide for autonomy of the council of the respective institutes. Now, I'm quite amused. Either the Treasury benches are confused. I can't understand. But I will come to that because Bedia ji made a very nice speech. I compliment him, but it's slightly different from what the government is trying to communicate and what he said. He said that this will help simplify and reduce governments interfering and bring in more autonomy.
How does this bring in more autonomy? It's actually the other way around. I mean, like Rajaji rightly said, that what is really the agenda? There is a hidden agenda, and I think I'd like to second what he said, that why are you taking the autonomy away of this institute by bringing in government? And one very good point he made, he was very happy to share with us that there is no money is given by to run any of these institutes by the government. So if government, so that means these are privately run professional institutes for the last 70 years in this country. So what is the need to say that we need to audit, our people need to go in? This defeats logic. For something which is independent, which does not take a penny. I am not saying this. The chartered accountant himself, who is speaking on behalf of the treasury benches, is saying कि सरकार से पैसा नहीं लेते. So why are you auditing then? Why are you interfering in institutes and playing in an area which doesn't belong to you? I mean, this is then no more a democracy, right? I don't want to use harsher words, but this is where exactly we are heading. So this is a very serious concern for me. Then he raised something about investors' protection. I second that. Every investor should be protected, sir. I'd like to bring to notice what Saugata Babu said. He talked about Satyam. I still remember growing up, sir, the American crisis, the Goldman Sachs dream. Every child all over the world wanted a job in Goldman Sachs. What happened? You know what happened. Then there was AA Triple, then DHL, ILFS, like Dr. Satyavati said. Everybody said, which is very interesting, and it's exactly what Modi ji, the Honorable Prime Minister, said, that he said there are the 4 big boys who are the auditing teams. Now, what is interesting about the 4 big boys, which I've spoken earlier in one of my speeches, is they will only audit, they will give you a AAA rating, they will only tell the bank that yes, this is a good company, and when it goes down, they will only say it's a bad. So how does this work? So अच्छा है बोलने वाला भी वही है, गलती निकालने वाला भी वही है, and then the bank, when it comes out, then, I mean, who takes accountability of this? And Honorable Modi ji said the same thing. He said there were 4 big boys playing here in this game. There in India needs, by 2002, at least 2022, big 8. Now, have the big 8 come or not? I really don't know. Because a lot of jingoism happens in this government, so I don't know. But really, where are we headed in this whole thing? And already there are multiple bodies and regulators. Do we really need another regulator, or are these not strong enough? What existing regulation is there is my question to ask to this honorable government. Second thing, they've talked about balance sheets and issues, lot of things about 3-year audit, 5-year audit, 2-year audit. My question to you, sir, is if you are an auditor for 3 years of a company, somebody comes in according to this new rule and he's a whistleblower. What protection will you give the whistleblower? There is still a grey area in it. So will whistleblowers be protected? Now, this is something I don't have proof to, but this is what I've heard, and I'd like to put it on, and I'm happy to take it back if it is wrong. Let me put that on the table. That I was informed, and it has come in some media papers also, but I don't have confirmed, because normally I like to table what I say. I like to authenticate what I say. When demonetization happened, there was a chartered accountant firm which the RBI had chosen to make sure to find out how much money was collected, how many notes were collected, and the government's report was 99.5 or something like that, 99.9%. But there was a grey area where there was some transaction that we've done with our currency with neighboring countries like Nepal. Now that money was, so it was actually above 100%. Now that auditing firm, which is trying to be honest, trying to be very transparent, the following year was asked to leave. And the RBI is not using that firm. So does that mean that when I'm a whistleblower, I'm being honest, when it doesn't suit the government, you will remove them? Then conveniently you will use the statutory body for what? Then if you're really cleaning up the system, then why did you remove that agency? Can this government tell me that? So when you talk about transparency, you have to walk the talk, not just make legislation and do all this jingoism. They were talking yesterday, I was actually deeply pained because I'm very proud of our finance minister. I'm proud she's a woman, she leads. For the last 2.5 weeks that we've been in session, mostly finance has been the department we've discussed. So I'm very proud of her, but I do see sometimes that she's getting a little unhappy nowadays, especially with all of us. And yesterday, sir, during the question hour, there was a question about non-performing assets. This is all connected to it, that's why I brought it up.
that auditors are questioned that, oh, because of you, आपने गलती करी, फिर ये non-performing asset हो गया, फिर पता नहीं क्या हो गया, बैंक ने हो रहा, ये सब UPA की है. Okay, I'll bear the brunt. हमसे गलती होगी, हम मानते हैं, sir, we were together in UPA. So, okay, we may have done something wrong and people sent us home for that. They did not put us back in. So, I accept that. But if you are saying that all the MPA is our fault, I just want to ask two questions to this government, and I have many examples which I can do. You have said that you got in a law of IBC. Now, in IBC, what are the kind of haircuts you're going? NPA is a bad thing, but haircut is a good thing. What is this logic, sir? I'll give you two examples, sir. And there are many like this. I'm just putting two quickly in forward issue. There's a company called Coastal Project. Now, this is very interesting, sir. This company was 8,000 crores. NCLT, it came to 1,500, from 8,000 to 1,500, NCLT. Now, what is the rule of NCLT? That if 66% people are willing, you can go for that price. If even one banker says no, it is rejected. Now, after this, it went into liquidation, which is the next step. This company, which was at NCLT going for 1,500 crores, went for 400 crores. किसका नुकसान हुआ? 900 करोड़ का भारत सरकार का, इस गरीब आदमी का. IVRCL, sir, another one, bigger company, 12,000 crores. What is the NCLT? 2,500 is the cost. You could have sold it for NCLT. Government said no. No NCLT. How much did they sell it for? 800 crores. 2,500. Just in these two companies, more than 2,000 crores Government of India has lost, which is... Sir, this is not only two companies. Saugata Babu, Jet Airways, the total, if you did, and this is all in the newspaper. I am not some rocket science. I am not an expert on finance. I am just going by what I am reading in newspapers, sir. 2 lakh crores is what they claim is lost. दोन शून्य किती असतात माहिती आहे का तुम्हाला अरविंदजी? आपल्याला काय माहिती मराठी माणसाला? 2 lakh crores is what this government has lost because they are confused कि NCLT करेंगे तो आरोप हो जाएगा तो liquidation में जाने दो. How? So are you purposely doing it for some cronies? I have no idea. But where is purposely? I don't know who's doing it. But can they answer this question when they attack us on NPA? With full humility, we are doing this. But can you tell me, and all these rules that they are talking about, 2013, we had made a lot of bills. You were a part of that cabinet. You know, but they didn't make the rules. So things were delayed, and then it's very easy to blame us that, oh, these people have done all these bad works and they are the ones responsible for it. It doesn't work like that, sir. And talking about autonomy, what worries me about them is every professional institute, this government wants to throttle the voice. How is it going to work? Look at this. This is very interesting. In this objects and reasons they've written, what are the objects of this? Enhance accountability and transparency by providing an audit of accounts of institute firm by chartered accountants appointed annually by a council of panels of auditors by the CAG of India and provide autonomy. What sense does this make? I mean, it almost feels like a joke because this is legislative mockery, sir. I mean, it's absolutely legislative mockery. Because all these confusion signals that they are giving us, there is one committee, another committee, somebody from the government coming, corporate affairs. What are you doing? And then my friend Shiv Kumar Udasi was talking yesterday of ease of doing business. Shiv Kumar Udasi, all this is not going to help doing ease of business, sir. This is only going to make a problem. The beginning and ending is totally contradictory. Mohammed Bashir. Sir, ease of doing business, what was the ranking when VP was there? For 10 years, क्या ranking था? अभी क्या ranking है? उसके बारे में बोलना सकते? Just want to bring to his notice, World Bank has stopped. The World Bank has stopped. Nothing will go on record except Supriya Sule, please. The World Bank, on his official note, has said that ease of doing business is something that they have stopped looking at. So I urge the Treasury benches that do not repeat to that. So carry on. Ease of doing business. So my request, even Bedia ji said Investors Protection Act. They want to invest. I did not want to talk about this topic on this. You want to? I'm happy to yield. You want to say something? No. 1 minute. He wants to say something. Sir, ease of doing business, the World Bank has given a report.
and she was talking about some World Bank report, which was a deep fake news. So she can go and talk about it, which is a fake news को इधर कोट करना है. आप सबको पता है सोशल मीडिया में क्या क्या हो रहा है. हाँ, सौगत बाबू फेक न्यूज को सर your party people is going to dispel it. फेक न्यूज को कोट करना, फेक न्यूज कोट करना, it is your honorable member. If you are able to prove it is a fake news, your time will come. Your members are going to speak. That time it can be repelled. No, sir, Speaker, please carry on. Please carry on. Please conclude. Sir, I only want to say. Nothing will go on record. Supriya, please carry on. Sir, I'm so worried about these. I'm so worried about the news item. Don't invite Yesterday, there was an item which was tweeted by somebody, which was All India Radio, which says that over 1.5 lakh investment has left India is what was all. Now, I'm not saying this. This was yesterday in the media. It was an All India tweet, which was 2 hours later deleted. Now, I don't know. Now, then they are saying fake news. So, what do we believe now? Is All India Radio? Then what is that department doing? Then should there not be a complaint? Come to the point with me, please. So my only request to this government is that I appreciate this is legislative mockery being done here, and when they're talking that they want investors protection, how are they protecting their investors? I don't want to go into that topic of crypto, but just today in my state, in Pune district, sir, in Pune today, there was a case cost. So when this government says they want to protect the middle income things, Investors Protection Act, what are they doing for that? Nothing. They only want to make sure, and how have they protected? I've given you examples. Look, after the NPS in the liquidation, who have they protected? Had they done this NCLT business, these people would have got 2 rupees to milta. Abhi to kuch nahi milne wala. They are only giving them a lollipop, which they will not even afford that much, sir. So I request this government to make sure not to make a mockery, like all the earlier speakers have said, send it to a select committee. It can be discussed, but today's chartered accountants do not need this kind of interference. No organization needs interference. Tomorrow sports mein karenge. So what will happen then? Okay. See, so then how? Then what will happen, sir? If every professional organization in this country which is run efficiently should be left alone, let's have faith in Indians. All Indians are not corrupt and all Indians are not crooks. So let the professionals do their job and let the government do its job. Thank you, sir. Shri Mohammed Bashir. Sir, so thank you very much, sir. Worldwide, this kind of legislations are taking place. As far as India is concerned, here also it is inevitable. Government says that this amendment is for to meet the changes taking place in the economic and corporate environment, and this country is also, this kind of a legislation is very much required. It is also stated that amendment of this act are based on the recommendation of the high-level committee constituted by the Ministry of Cooperative Affairs. Now, sir, while reacting on this, I am with a mixed feeling. Now, the intention of the government may be good. The intention and that desire is what? One, strengthening the disciplinary mechanism, speedy disposal of the cases, that too within a time frame, provide for a separate chapter on registration of the firms, enhance accountability and transparency, provide autonomy to institution for fee-fixing kind of things. Sir, prima facie, this may look nice, but while going through the cross of the bill, you will feel lack of confidence and serious doubt whether this bill can achieve the real goals as envisaged in the aims and objectives. Now, sir, let us come to the point. My doubt is that the interest of the corporates is taken more consideration in this. Number two is, sir, government is taking a kind of extra interest on tightening the grip on autonomous bodies. Sir, this will provide for constituting board on discipline, and that composition also is stated in this. If you look to this,
we feel that the government nominee gets excessive power in the legislation. Even though the bill says that this is to address conflict of interest between the administrative and disciplinary arms of the institute, I have my own doubt whether this bill will have a negative impact other than visualized in your this game. The bill, you are saying that it's about autonomy, but in fact, this may help to abridge the autonomy. True that I'm not in favor of unlimited autonomy. Autonomy should be coupled with accountability. There I agree with the content of the bill. Sir, here multiple boards are suggested. And with regard to presiding officers, that also said in detail in this. But in that what we can see is, the bill amends the act to provide that the presiding officer must not be a member of institute and shall be nominated by the central government. There everybody differs, sir. There is no justice in it. Because if you give an upper hand to a government nominee than the subject expert, it is something to be objected, sir. If the government nominee is replaced by technical member's place, if you put a nominee, that will have, sir, adverse effect. Sir, government nominee are not full-time sitting member there. So his service also may be very much limited. And administrative and professional knowledge, it will have to be considered, sir. It must have a due consideration. Instead of bureaucrats controlling the entire thing, these technical persons and their skill will have to be respected more in that, sir. Not only this, sir, another handicap is with this. This kind of action may demoralize our technicians, our experts in various bodies, sir. Then, sir, in this legislation, a coordination committee is suggested. Many of my former learned speakers were saying about that. This regulatory body, actually I don't understand what kind of coordination they are making. When I have gone to the bill, there also, I don't find much logic in making this kind of things. My objection is not that, sir. The chairman of this coordination body is the Secretary of Corporate Affairs. Sir, it's not fair. Because how can he coordinate the entire thing? Not only that, this independent body on the top of it, you are putting the Secretary of Corporate Affairs. There is an inconsistency there. It is not progressive. At the same time, it is an action of regressive. I wish to point out that also, sir. So I don't want to take much of the time. What I would like to say is, see, professional kind of institutions. Now what is happening? A general kind of engrossment is taking place there. Independency of this kind of thing. Autonomous nature of such institution will have to be honored, sir. In between that, if you put government officers, in between that, the very spirit of the autonomy will be forfeited. That is my apprehension. I would like to share that also, sir. Similarly, sir, one thing more I would like to say and then conclude. Now, this brief discussion is okay. The 100 persons, they have made their observations. But at the same time, it must have discussion, threadbare discussion at a wider circle. So, sir, I humbly suggest that this may be referred for a select committee. Sir, with a few observations, I conclude. Thank you very much. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. The chartered accountant, the cost and work accountant and the company secretary's amendment bill 2021 पे बोलने का मुझे मौका दिया. महोदय, ये विधेयक अनुशासन समिति के प्रमुख के रूप में गैर सीए के लिए प्रावधान करके चार्टर्ड अकाउंट पेशेवरों को शक्तियों को कम करता है. अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में केवल उचित विशेषज्ञता और अनुभव वाले सीए को निर्णय लेने की अनुमति दी
जानी चाहिए, लेकिन ये विधेयक उस प्रावधान को समाप्त कर रहा है। नए विधेयक में अदर मिसकंडक्ट की विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अस्पष्ट और खुले शब्दों का दुरुपयोग ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट और अनावश्यक सेंसरशिप में कटौती करने के लिए किया जा सकता है। विधेयक में CA लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों के लिए 3 संस्थाओं के बीच कार्य को समन्वित करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। तथापि ICAI द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि ऐसी समिति संस्थाओं को स्वायत्तता और निर्णय लेने में अनावश्यक घुसपैठ का कारण बनेगी। PM मोदी जी ने कहा था कि बैंकरप्सी कोड और दिवाला समाधान प्रक्रिया जैसे कानून बनाने में CA की बड़ी भूमिका है। फिर भी इस मामले की सच्चाई यह है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसे एक बड़े सुधार के रूप में भी पारित किया गया था, पूरी तरह से विफल हो गया है। अब तक अधिनियम तहत CIRP कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए संदर्भित 3312 मामलों में से केवल 190 को समाधान द्वारा बंद किया जा सका है। इसे पता चलता है कि मोदी जी की सुधार केवल कागजों पर है, जमीन पर नहीं है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन यह सच है कि नए आयकर पोर्टल ने तकनीकी गड़बड़ियों के कारण CA और करदाता दोनों के भारी समस्याओं पैदा कर दी, जो महीनों से तय नहीं थी। फिर सुधारों और नए पोर्टल का भी मतलब नहीं है यदि वे जमीन पर काम करने में विफल रहते हैं। इस प्रकार मौजूदा कानूनों में सुधार की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार को मौजूदा कानूनों को बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री गोपाल शेट्टी। Cost and Works Accounts and the Company Secretary Amendment Bill 2021 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। मेरे पूर्व वक्ता, मेरे सहयोगी सुभाष बेहरा जी ने जो बिल और अमेंडमेंट के मेरिट्स के बारे में जो बातें कही है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। और बेहरिया जी ने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स, जो अकाउंटेंट की जो संस्था है, उनके बारे में कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो मैं भी इस मत से हूं कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अच्छा काम किया है। हमारी बहन महाराष्ट्र की सुप्रिया सुले जी ने कहा तो अच्छा किया, तो ये आप क्यों रहे हो? जो अच्छा हो रहा है उसमें और अच्छा करने का हमेशा स्कोप होता है, गुंजाइश होता है। और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा और अच्छा हम कैसा कर सकते हैं उसके बारे में बातें करते रहते हैं, और वो स्वयं भी करने का प्रयास करते हैं, जिसका फल हम सब लोग 2014 के बाद में देख रहे हैं। देश कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश के लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है, और ये जो विश्वास बढ़ रहा है इसको और बढ़ाने का प्रयास इस बिल के माध्यम से वो कर रहे हैं। सभापति महोदय जी, जो बिल के केंद्र मुख्य बिंदु के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो डिस्पोज नहीं होते हैं उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया है। अब ये जो 3-2 का रेशियो था, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर और 2 गवर्नमेंट के मेंबर जो होते थे, मैं ऐसा मानता हूं कि पहले से ही ये गलती हुई है कि पहले से एट पार 3-3 का होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन जो नहीं हुआ तो उसको अभी करके और अच्छा करके आगे बढ़ना ये बुद्धिमान लोगों का काम है, और इस बिल के माध्यम से वो सरकार प्रयास कर रही है, तो मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने उसका समर्थन करना चाहिए। बार बार ऑटोनॉमी की बात आती है। सभापति महोदय जी, मैं 30 साल से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में काम कर रहा हूं, और ऑटोनॉमी के बारे में कॉर्पोरेशन में हो या तो विधानसभा में हो या तो पार्लियामेंट में ऑटोनॉमी की बातें होती है। मैं हमेशा इस बात से सहमत हूं कि ऑटोनॉमी को भी एक चौकट, एक स्क्वायर बॉक्स से रहकर ही उसको काम करना है। ऑटोनॉमी यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। ऑटोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि जो रूल्स, जो नीति नियम बनाकर उनको काम करने के लिए दिया गया है, उसमें कोई गवर्नमेंट के
लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, उतना ही उसका पावर है। ऑटोनॉमी का मतलब ही उतना होता है। ऑटोनॉमी ये नहीं कि वो कुछ भी करेगा तो चलेगा, और कोई ऑटोनॉमी लिया नहीं गया है। मैं तो मानता हूं कि ऑटोनॉमी को और मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है, ऑटोनॉमी को और स्वच्छ बनाने का प्रयास हो रहा है। तो इसके लिए इस बिल के माध्यम से हम सब लोगों ने इसको समर्थन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अमेंडमेंट जो आया कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, डोमिनेशन कमेटी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? मिलजुल कर काम करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है सेंटर और स्टेट के सहयोग से। तो कोऑर्डिनेशन जितना ज्यादा हो, जितना अच्छा हो, वो एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसलिए मैं मानता हूं कि ये भी जो बदलाव आया है इसका हम सब लोगों ने समर्थन करना चाहिए। सभापति महोदय जी, मैं एक बात मेरे समझ में आता नहीं है, पहले हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना बड़े पैमाने पे नहीं था। 1991 के WTO एग्रीमेंट के बाद में देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उस रफ्तार से सीए जितने बच्चे पास होकर आने चाहिए उतने नहीं आते, ये मेरा मानना है। क्योंकि यहां पर भी कोई मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास होता है क्या, इसके बारे में भी हम सब लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो, ए की सरकार हो या बी की सरकार हो, सरकार चलाने के लिए टैक्स के माध्यम से आया हुआ पैसे से सरकार हम चला सकते हैं। इसलिए सरकार अच्छे ढंग से चलाकर बेहतर सुविधा देश के लोगों को देने के लिए टैक्स ज्यादा कैसे आए, उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का एक क्लिप हम सब लोगों ने देखा है, गए साल का उन्होंने कोट किया कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉरेन घूमने के लिए गए। कितने करोड़ लोगों ने गाड़ियां नहीं ली, अच्छी बात है, हमारे देश प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लोग सुखी हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन देश के तिजोरी में टैक्स के माध्यम से पैसा कितना लोग भर रहे हैं, ये हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का देखने का काम नहीं है क्या? तो क्या इस सेक्टर में हमको बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है क्या? मैं मानता हूं कि जो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका हम सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। लेकिन हर जमात में अच्छे और बुरे लोगों की एक संख्या है, ज्यादा कम उसके बारे में डिबेट एंड डिस्कशन हो सकता है। वैसे ही इस सेक्टर में जो गड़बड़ हुए, घोटाले हुए, जो धांधली हुई, उसमें उनको मदद करने वाले भी इस सेक्टर में से लोग थे ना सभापति जी। तो क्या उनके बारे में सरकार ने कोई संज्ञान लेना नहीं चाहिए? हम जैसे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देश के लोगों ने यहां पर चुनकर भेजा है, क्या हम लोगों ने इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए? जो रॉन्ग डूअर्स है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है तो क्या उसके बारे में बदलाव नहीं होना चाहिए? तो मैं मानता हूं कि बदलाव होना चाहिए, और हम सभी लोग मानते हो कि बदलाव होना चाहिए, और ये बदलाव लाने का प्रयास सरकार कर रही है। सभापति महोदय जी, मैं मानता हूं कि ये सही समय है इस बिल में अमेंडमेंट करके हमको आगे बढ़ने के लिए। देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एमएसएमई सेक्टर कितने तेजी से बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के लोगों ने आने वाले दिनों में उस इंस्टीट्यूशंस में से बच्चे ज्यादा पढ़कर पास होकर बाहर निकले, इसका हमने प्रयास करना चाहिए। एक समय था 2-3% बच्चे ही पास होते थे, अब ये परसेंट बढ़कर आगे बढ़े हम। मैं मानता हूं कि इसमें और आगे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो 5वीं 6वीं में जो हम पढ़ाई करते थे वो आज नर्सरी के बच्चे हमारे घर में पढ़ते हैं। हमको भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा कौन सा इतना बड़ा कोई टेक्निक है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी तो मोदी जी के जमाने में तो सब डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारे पेपर्स आते हैं, उसको खाली कैलकुलेशन करके हिसाब करके कितना टैक्स भरना ये तय करना चाहिए। इस देश में हम लोगों ने ये भी देखा, एक तो जो पेपर्स देते हैं उसके हिसाब से सीए जो होता है वो कितना टैक्स भरना है ये बताता है जो ग्राहक होते हैं उनको। दूसरा एक तरीका यह है कि सीए पूछता है कि आपको इस साल में कितना टैक्स भरना है। ये हम सब लोगों ने देखा है, हम सब इस दायरे में से गुजरे हुए। सरकार जैसे चलती थी, सरकार को जैसे लोगों ने चलाया वैसे चलने का प्रयास लोगों ने किया। अब बदलाव का समय आ गया है, तो मैं मानता हूं कि हमने बड़े पैमाने पे जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास करना चाहिए। और ये लाने का प्रयास कौन करेंगे? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों ने करना चाहिए। जब हमारे मत विस्तार में अगर वोटर की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो चुनाव के पहले हम लोग उनका नाम एनरोल करते हैं ताकि ये हमको वोट दे। तो देश में भी जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं तो उनको टैक्स के दायरे में लाने का काम
चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का है, और मैं मानता हूं कि हमारे सब चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई जो है वो बहुत ही जवाबदारी से काम करेंगे। मैं तो मानता हूं कि इनको एक टारगेट देना पड़ेगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री होने के बाद में हम सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद आदर्श ग्राम के नाम पे एक एक और एरिया दिया हमको काम करने के लिए, और हम सब लोगों ने किया, उसकी संतुष्टि भी हमको मिली, हमको समाधान भी हुआ कि हम अपने मतदार संघ के बाहर जाकर अन्य लोगों की भी सेवा कर पाए। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के लोगों ने नए टैक्स के दायरे में बड़े पैमाने पर लोगों को लाने की आवश्यकता है, जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स आएगा, और टैक्स जितना ज्यादा आएगा उतना हम बेहतर काम कर पाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल से एमपी लैड बंद हुआ है, अभी फिर एक बार चालू हुआ है। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर जो एमएलएस होते हैं उनको 5 करोड़ रुपया मिलता है, और हम 6 विधानसभा में एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है। मैं मानता हूं कि टैक्स के माध्यम से अगर ज्यादा पैसा सरकार की तिजोरी में आएगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसके भागीदार भी हम बनेंगे। वी कैन डिलीवर गुड्स मोर देन टुडे, ये हमको भी उसका लाभ मिलने वाला है। तो ये क्षेत्र में सभी लोगों ने पॉलिटिक्स को बाजू में रखकर हम सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये जो एक बात के बारे में डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है, उसमें बदलाव भी हो सकता है, आने वाले दिनों में भी आएगा। मैं मानता हूं कि ये सरकार 2014 के बाद में आने के बाद में इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड और जीएसटी में जितना अमेंडमेंट हर पार्लियामेंट के सेशन में लाकर जितने सिस्टम को ठीक ठाक करने की आवश्यकता थी उतना करने का ये सरकार ने प्रयास किया है। नहीं तो एक बार कायदा बनने के बाद में 10-10 साल, 15-15 साल उसमें अमेंडमेंट तो आता ही नहीं था, चलता है, चलाओ, चलने दो, कोई पूछता नहीं था। अब उसमें जो भी करेक्शन होती है रिलेटेड लोग बताते हैं कि साहब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो सरकार ने उसको हर बार हमेशा उसको बदलाव करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है जीएसटी में और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में। इसमें भी जो हम कर रहे हैं इसमें और बेहतर करने के लिए आने वाले दिनों में स्कोप होगा, तो पार्लियामेंट में तो हम बैठे ही है, ये हो सकता है। अब किसी ने ये सोचने की क्या आवश्यकता है, मुझे भी लगता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका जो चेयरमैन होगा उसने होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आईएएस ऑफिसर्स है उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग कभी कभी गाइडेंस करते, बिकॉज वी आर प्रैक्टिकल, हमको पता चलता है कि मतदार संघ में लोग कैसे हैरान है, परेशान है। तो ये कोई मापदंड नहीं हो सकता है किसने क्या करना है, किसने नहीं क्या करना है करके। और इनका जो ऑडिट करने के लिए जो पैनल में से मेंबर उनका ऑडिट करेगा, मुझे लगता है कि ये भी अमेंडमेंट बहुत सही है, क्योंकि कोई भी सर्जन कितना भी एक्सपर्ट होगा तो वो जब बीमार होता है तो उसको ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती होगी तो उसको अन्य डॉक्टर के माध्यम से ही करना पड़ता है, वो स्वयं तो करता नहीं है। इसलिए जो अच्छी बातें हैं, जो सही है, उसको हम सब लोगों ने एकदम ओपन माइंड से स्वीकारने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये किसी ने भी ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, जो बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, जो बहुत डिग्री है उसके पास में, वही सब कुछ कर सकता है। इस पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस देते हैं, और जो महानगर पालिका के स्कूल में से पढ़कर आए हैं वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस देते हैं, ये भी हमने पार्लियामेंट में भी देखा और पार्लियामेंट के बाहर भी देखा है। इसलिए हर व्यक्ति को काम करने का स्कोप देना चाहिए। ये सरकार हर व्यक्ति को काम करने का स्कोप दे रही है, इसलिए हम सब लोगों ने समाधान मानकर जो ये बिल आया है इसको सब लोगों ने सपोर्ट कर हम आगे बढ़ना चाहिए। जो भी बदलाव आने वाले दिनों में उसकी आवश्यकता होगी, मैं मानता हूं कि सरकार उसके बारे में भी संज्ञान लेंगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के जो अच्छे सीएस है उनका फिर एक बार यहां पर अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस सिस्टम को चलाया, लेकिन इस सिस्टम को और अच्छे बेहतर ढंग से चलाने के लिए सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया है उसको उन्होंने भी बहुत खुले मन से स्वीकारते हुए हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, यही भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करते हुए फिर एक बार इस बिल को समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री N.K. Premchand. Thank you very much, Chairman sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2021. Sir, I rise to oppose this bill because this bill has come into discussion for your debate only because of the statement of the Honorable Prime Minister when he was speaking at the ICA Institute of Chartered Accountants of India Foundation Day. He told the Chartered Accountants that their signatures were more powerful than that of the Prime Minister and urged them to introspect and improve their standards. The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has also highlighted ICA's embarrassing disciplinary record wherein only 25
errant auditors had been prosecuted over the past 11 years and 1,400 cases were pending. This is the real cause by which, root cause by which this bill is generated. The only question, the prime question which I would like to ask to the Honorable Minister is whether this bill, that is the proposed amendment bill, is sufficient to meet the purpose of Honorable Prime Minister, or in order to commit the Honorable Prime Minister's words in the ICA Day, whether it is sufficient to meet the purpose. Sir, according to me, no. Why? Because all these three organizations, Institute of Chartered Accountants of India, and Institute of Works and Cost Accounts of India, and Institute of Company Secretaries of India, all these three organizations are the creations or the statutes of the Parliament. They are independent, autonomous bodies. What is the proposed amendment in the bill? In the bill, all these three professional bodies of chartered accountants and cost accountants and company secretaries have to be there, their powers have to be limited. That is Chartered Accountant Act of 1949 and Cost Accountants Act of 1959 and Company Secretaries Act of 1980. All these three acts have to be amended, making the regulating the professions of chartered accountants, cost accountants, and company secretaries. So the proposed amendments are with an intent to place the chartered accounting under considerable scrutiny, with more regulatory control, and thereby to strengthen the disciplinary mechanism of the chartered accountants. Sir, chartered accountants in the country play a very important role in the preparation and audit of financial statements, while company secretaries plays a vital role in strict compliance of the statutes. That is the role of the company secretaries. The major concern which I would like to express regarding this amendment bill is, most of the honorable members have already stated in this house, that is regarding the autonomy. Sir, from 2014 onwards, after BJP-led NDA government has come to power, they are trying or attempting to encroach into the autonomous bodies, encroaching into all other organizations to have their authority on all independent autonomous organizations. We have seen in the case of Medical Council, National Medical Commission Act is also, if you examine it, nowadays it is everything is being controlled and guided and regulated and decided by the government of India, because their representatives are controlling the National Medical Commission. Similarly, this executive is imposing and encroaching into various autonomous institutions. This is another typical example by which the government of India is encroaching into the autonomous character of all these three organizations. So that is the main apprehension and opposition which I would like to make. Sir, these three institutions are having self-governing exercise of self-professional institutes. They are self-professional institutes or bodies. As rightly pointed, no money or no budgetary grant is from the government. My concern that the autonomy of the professional bodies are under attack. So slowly the government is taking control of all these institutions, just like in the case of the National Medical Commission Bill. Sir, what is the role of self-governing professional bodies? Sir, I would like to quote the speech or observations made by the chairman of the Finance Standing Committee, Sri Jain Singha ji, in the Standing Committee. I would like to quote it. The autonomy and independence of the professional institutions should not be interfered unnecessarily. The integrity associated with the financial reporting cannot be diminished in any way, since it reflects the business standards and financial robustness for the entire country. This is the observation of the Standing Committee Chairman, Sri Jain Singha, in the Standing Committee. I have got it from the records. So if that be the observation, since it reflects the business standards and financial robustness for the entire country. This is the observation of the Standing Committee Chairman, Sri Jain Singha, in the Standing Committee. I have got it from the records. So if that be the observation of the Chairman of the Standing Committee of Finance Committee, they have scrutinized the bill. How can the Standing Committee agree with the provisions of this bill? That is a pertinent question which I would like to make, because autonomy shall never be interfered unnecessarily. Here, interference or unnecessary interference of the executive on the professional autonomous body is there.
So how can Jayant Sinha, as the chairman of the standing committee, is making a very clear observation regarding the autonomous character of all these organizations, and at the same time supporting this bill means it is squarely contradiction to the observation which he has already made. So, sir, let us examine the crucial amendments which are being proposed in the bill. The crucial amendments, the first amendment is, I am confining to only 3 amendments. The first amendment is regarding section 9A. A new provision is incorporated, section 9A, by which constituting a coordination committee. Sir, coordination committee, what is the constitution of the coordination committee? Sir, the coordination committee's constitution is the president, vice president and secretaries of all these 3 organizations: Chartered Accountants Organization, Cost Accountants Organizations, Company Secretaries Institute. All these 3 organizations, president, vice president and the secretaries, all these will be the members of the committee. And who is chairing the committee, sir? The chairman of the committee is the secretary of the Corporate Affairs, Ministry of the Corporate Affairs. Sir, it is shameful. Is it independent? Is it autonomous character of an organization? The minister, the company secretary, the Ministry of Corporate Affairs secretary will be chairing this body, all the 3 organizations. And the name of it is coordination. And what is the purpose? The corporate affairs for the development and harmonization of the professions of chartered accountant, this cost accountants and the company secretaries. And since I have no time, if you, sir, examine section 9A, what are the powers, the functions of all 3 organizations are totally regulated by the executive. That is the Minister, Secretary, Corporate Affairs. He is the chairman, he is regulating, and he is not only regulating, he is controlling. So, first objection, the strong objection is regarding 9A. Section 9A, new section is incorporated. It is totally against the autonomy of all these organizations, number 1. Number 2, amendment of section 21. Since no time, I am not going to the sections, reading the sections. That is the disciplinary directorate. Sir, I fully agree with that amendment, because a new provision for the appointment of at least 2 new joint directors to deal with the disciplinary cases. Because I have no objection in this. Because why? Because this will enhance the capacity of the disciplinary directorate to deal with the complaints, and also fixing a time frame by which these petitions or the complaints or informations have to be disposed of within a fixed time. I fully agree with that amendment. I am coming to another controversial amendment, is amendment to section 21A. Sir, you may kindly see Board of Discipline. As per the proposed amendment, the Board of Discipline, who will be the Board of Discipline? The chairman, the presiding officer and 1 member of the Board of Discipline will be nominated by the central government. Board of Discipline, the chairman and 1 member will be from the institute. And the chairman and 1 member shall not be a member of the institute. He shall never be a member of the institute and who is having law experience and all these things. And coming to, sir, amendment to section 21B, that is disciplinary committee. Sir, disciplinary committee, in which it is saying the presiding officer and 2 other members are nominated by the central government who are not in the members of the institute. What is the independent and autonomous character of all these organizations? The chairman, the presiding officer, as well as 2 members of this disciplinary committee who are not the members of the chartered accountants, who are not the members of this institution, they will be governing the disciplinary committee. Means what is the role of this institution? Independence, autonomy. Sir, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, is having a long tradition and having larger strength, nearly 3.5 lakh members and 7.5 lakh students are there. Their main, the main concern of this Chartered Accountants Institute, I am having it detailed, since there is no time, I am concluding, sir. So their main concern is the presiding officer of the disciplinary committee should be a chartered accountant. And present mechanism, there are 5 members. Present mechanism, there are 5 members. 2 from the institute, 2 from the government of India, and 1 from the president. That is 2 government nominees are already there. And you may kindly see all decisions during the 72 years. All these 72 years, all the decisions are taken unanimously. Not even a single instant of dissent was there. The presence of the government nominee is mandatory for quorum. As per the present provisions of the Act, even the presence of a government nominee is must for having the quorum of the meeting.
And this and sir, the president, vice president, the CCM are elected representatives of the chartered accountants and are accountable and subject to public scrutiny. In this act, that is being stated, the statement saying that they are no having accountability. They are no, because they are being elected representatives of the chartered account. They are subject to accountable and also they are subject to the public scrutiny. Sir, the present this practice is since 72 years without any complaints. In the system now, the government is normal. So in this case, all these cases, nominees are acting as the umpire. The government nominees are acting as the umpire. This was the position. This was the precedent. So the conduct of the professionals, my point is, I'm concluding, the conduct of the professionals should be judged by the professionals only. This should be applicable to all the professions, the medical profession, legal profession. You are an advocate, eminent advocate. I'm also from the legal profession. Who is judging the capacity or the conduct or misconduct of an advocate? It is the Bar Council chairman or the Bar Council Disciplinary Committee. Who is heading it? It is by the lawyers. As far as the National Medical Commission, now we have enacted a law by which who is that? Majority of the disciplinary committee as far as the medical field is also doctors. Why in the case of chartered accountants alone it is not applicable? Sir, here the conduct of the professionals should be judged by the professionals only. The National Medical Commission Act 2019, there is a disciplinary mechanism for the failure of the doctors by the majority of the doctors. The disciplinary committee, according to the National Medical Commission Act of 2019, majority of the disciplinary committee members are doctors. Yes, absolutely, because professionals are judges by the professionals. And similarly, the Bar Council of India also, none of these bodies are, and what is the reason? Conflict of interest. If you are saying conflict of interest, sir, if you are saying the conflict of interest, none of the organization, the autonomous organization in the countries can have any independence in the country. Because everywhere you can very well say that there is conflict of interest. So there are so many objections have already been given by this ICA. I'm not going to read all these things. And they are suggesting that the presiding officer of the disciplinary bench should be a chartered accountant. The present disciplinary mechanism is well. If any amendments, kindly come with the positive amendments. And the advantage of the present disciplinary system has to be kept in. The concerns of the proposed change envisaged in the bill, audit and accounting require highly specialized skill. High specialized skill is required as far as auditing and accounting. There you are putting a secretary or putting a joint director or some executive from the ministry and doing all these things means it is in violation of the basic principles of accounting and auditing which is being established and which is being continued for the last 72 years. Sir, I'm not going to, sir, thank you very much for giving me this much of time. And so my basic point is this is attacking the autonomy of the professional bodies like ICAWI and similarly Cost and Works Chartered Accountant of India as well as the Institute of Company Secretaries. Since it is against the basic principles of autonomy, I strongly oppose this bill with these suggestions. I once again thank you for giving me this much of time. Thank you very much, sir. Sri Girish Chand. Honorable Member Girish Chand. सभापति महोदय, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 लागत और संक्रमण लेखफल अधिनियम 1959 कंपनी सचिव अधिनियम 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकल्प लेखापाल और कंपनी सचिव के क्षेत्र में लगे हुए व्यवसाय कर्मचारी और संस्थाओं को रेगुलेट करती है। इन बिलों का मुख्य उद्देश्य है अनुशासनात्मक कार्यवाही को संबद्ध और मजबूत प्रदान करने का है। कहने का आशय है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से जो व्यक्ति या फर्म अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी सेवा प्रदान करता है वह उस संस्था का सदस्य माना जाता है। यदि उस सदस्य के खिलाफ किसी के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उस शिकायत का निर्धारित समय के अंदर निस्तारण करने का इस बिल का उद्देश्य है। सभापति महोदय, जैसा कि हाल के बिल का उद्देश्य कि इन तीनों संस्थानों के लिए डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बोर्ड की स्थापना करना, जैसे उस संस्था का एक डायरेक्टर डिसिप्लिनरी नामित किया जाता है और उसी संस्था का वो अधिकारी होगा। इसके बाद उस डायरेक्टर के नीचे कम से कम 2 ज्वाइंट
डायरेक्टर नामित किया जाना है। अतएव तीनों संस्थानों में कम से कम 3-3 इस प्रकार कुल 9 डायरेक्टर डिसिप्लिनिंग और संयुक्त ज्वाइंट डायरेक्टर नामित किया जाना है। ऐसा कि हम सभी को पता है, जब किसी संस्था में किसी एक पद का सृजन होता है तो वहां पर आरक्षण अनुमन्य नहीं होता है, लेकिन एक से अधिक की संख्या में पद होते हैं तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि आरक्षण के अनुसार पदों की भर्ती या नामित किया जाए। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि सभी संस्थानों में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसमें कम से कम एक डायरेक्टर डिसिप्लिन और 2 ज्वाइंट डायरेक्टर नामित किया जाना है। उनमें यह व्यवस्था की जाए कि उन 3 पदों में से एक पद अनुसूचित जाति और एक पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों को भी यदि इस संस्थान में संबंध किसी सदस्य फर्म के खिलाफ कोई विवाद या शिकायत प्राप्त होती है तो उनका निस्तारण बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ मानसिकता के साथ किया जा सके। अन्यथा इन दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों का कैसे कैसे आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण किया जाता है, ये बात किसी छिपी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा की गई मांग के संदर्भ में अवश्य रूप से उनके मंतव्य का संसद में बताने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सदन में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट कंपनी सचिव संशोधन बिल 2021 पर चर्चा हो रही है। सभापति, सरकार का ये कहना कि इस क्षेत्र में नीति के सुधार की तरफ बड़ा कदम है, लेकिन धरातल पर इसका क्रियान्वयन होगा तब सच्चाई सामने आएगी। सभापति महोदय, जब एनडीए की सरकार बनी थी 14 और 19 के अंदर बहुत बड़ा प्रचार किया गया कि फालतू के जो भी बिल और कानून हैं उनको हम रिपील करेंगे जब हम सत्ता के अंदर आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक एक दिन के अंदर कई बार 2-2, 3-3 बिल लाए गए, पास कराए गए और फालतू के कई कानून इस सरकार ने बनाए। इस बिल की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी। सब ये बिल चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 और कंपनी सचिव एक्ट 1980 में संशोधन करके उनके अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। सीए पे अगर वो गलतियां करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे हो, ये बिल इसके लिए लेकर आए। इसके प्रावधानों में जाने के पहले चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है कि नियामक संस्थाओं का भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कितना बड़ा योगदान है। आज भारत 2.66 ट्रिलियन US की जीडीपी साइज के हिसाब से विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एमसीए के डाटा के अनुसार 31 मार्च 2021 तक भारत में कुल 13,44,000 से अधिक सक्रिय कंपनियां हैं, जिनमें कुल कंपनियों में से 65,992 कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और 6,740 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। सबसे आज देश में 3 स्टॉक एक्सचेंज है, जिनका 28 मई 2021 तक के डाटा के अनुसार बाजार पूंजीकरण लगभग 3.03 ट्रिलियन US तक है। इस परिप्रेक्ष्य में दृढ़ नियामक संस्थान न केवल देश के कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं, बल्कि देश की जनता के धन को घोटालों से भी बचाते हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था धोखाधड़ी घोटालों से अछूती नहीं रही। बड़े बड़े घोटाले इस देश के अंदर हुए, चाहे वो यूपीए की सरकार थी, चाहे एनडीए की सरकार थी। इस सरकार के सत्ता में आने से पहले हर्षद मेहता सिक्योरिटीज स्कैम 1992, ट्राई श्योर इंडिया लिमिटेड 1975-76, द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और केतन पारिक स्कैम 2000-2001, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड 2008, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज 2008, नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड NSCL 2013 हो या इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हुए जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर 2017, नीरव मोदी PNB 2018, IL&FS 2018, यस बैंक 2018-19 और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड DHFL 2020 में ABG शिपयार्ड द्वारा किया गया बैंक घोटाला था। इसकी गूंज भी पूरे देश के अंदर ही। समझ में घोटालों ने स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा की भूमिका और प्रभावशालिता पर न केवल सवाल उठाया, बल्कि देश की जनता को ये मैसेज दिया कि विपदा की घड़ी में कोई नियामक संस्था उनके साथ नहीं खड़ी है। सवाल ये भी उठता है, क्या भारत के नियामक संस्थाएं इतनी काबिल है कि उन घोटालों को होने से रोक सके और एक प्रीएम्पेटिव अप्रोच दिखाने की रिएक्टिव। उदाहरण के तौर पर नीरव मोदी PNB घोटाले के उजागर होने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का गठन कर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। लेकिन ICAI जो CS को विनियमित करता है और अपने सदस्यों के खिलाफ कम प्रभावशाली कार्रवाई की प्रक्रिया रखता है, ने NFRA के गठन का विरोध किया। अफसोस
इस बात का कि मार्केट के रेगुलेटर SCBI तक के पास लिस्टेड कंपनियों के ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इससे इन सब घोटालों में शामिल CA और CS बड़ी आसानी से थोड़ा सा जुर्माना देकर छूट जाते थे। ICAI के अधिकार में तो अधिकतम सजा 3 महीने का सस्पेंशन और 1 लाख रुपए जुर्माना था। सब इसलिए मेरी मंत्री महोदय से एक ही मांग रहेगी कि इस बिल में जो सजा का प्रावधान आपने किया है, संस्थान के रजिस्टर से सदस्य का नाम हटाना, उसे फटकार लगाना, 5 लाख तक का जुर्माना लगाना, बिल जुर्माने की अधिकतम राशि को 10 लाख रुपए करता है। मेरी मांग है कि इसमें जब आप बिल लेके आए दोबारा, तो ये सुझाव के साथ इस बिल को लाए, जिसमें 3-4 हम सुझाव भी देंगे, उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी जोड़ी जाए ताकि बेलगाम हुए ऑडिटरों के लिए कारावास एक डेटरेंट साबित हो। ये मेरी मांग रहेगी। इसी के साथ सरकार से ये भी मांग करता हूं कि CA या स्टैट्यूटरी वैज्ञानिक ऑडिटरों को मार्केट फिड्यूसरी का दर्जा दिया जाए ताकि सेबी जैसी संस्थाएं भी इन पर कार्रवाई कर सके। सौद महोदय, इस बिल के संदर्भ में मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि ICAI के केंद्रीय परिषद के सदस्य का वर्तमान में 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और इस बिल के माध्यम से ये कार्यकाल बढ़ा के आप 4 साल कर रहे हैं। वे कोई भी CA अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, इसे बढ़ाकर 4 वर्ष किया जा रहा है। इसलिए यदि वर्तमान में कोई CA इसका सदस्य 3 बार चुना कर 9 साल हो गया, 4 साल और उसको कर दोगे तो 9 से 13 साल हो जाएगा। इसलिए यदि वर्तमान में कोई CA इसका सदस्य है तो उसका वर्तमान कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित रखा जाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सभी और नए लोगों को मौका मिल सके। इस पर आप जवाब देते समय जरूर स्पष्टीकरण जरूर दें। एक मेरा सुझाव है सभापति महोदय कि अनुशासन बोर्ड जो आप बना रहे हैं, इसमें एक निदेशक सहित 3 सदस्य, जिसमें एक आपका होगा लो या अनुशासनिक, एक दूसरा होगा अर्थशास्त्री या व्यापारी और तीसरा काउंसिल का सदस्य होगा। मेरा सुझाव है बिल को नए सिरे से आप लाए, इसमें राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनको भी इसमें सदस्य बनाया जाए ताकि और पारदर्शिता के साथ काम हो सकता है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि RBI का सर्कुलर बैंक ब्रांच ऑडिट संबंध, जिसमें पहले 2020-21 तथा 2021-22 का है, पुराने प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक के अपनी 20 करोड़ से अधिक के एडवांसेज वाली शाखाओं की 100%, 20 करोड़ से कम एडवांसेज वाली शाखाओं में 1/5 शाखाओं की ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाई जाती थी। 2021 की ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने RBI को कोरोना महामारी के हालातों को मद्देनजर करवाई जाने वाली ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया, जिसको RBI ने मानते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90% एडवांस की ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था। एडवांस के 90% ऑडिट वाले प्रावधानों को भी 17 मार्च 2022 को आपने संशोधित किया, एक सर्कुलर जारी करके घटाकर 80% कर दिया। इसे नए प्रावधानों से करीब 50% शाखाएं बिना ऑडिट के रह गई। ये घोटालों का प्रमुख कारण बन रही है, ये दायरे से बाहर हो गई। इस प्रकार के निर्णय जो न तो देश के बैंकिंग में नई वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है, वे नई देश के जमाकर्ताओं के हितों के, क्योंकि आज रोज बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं, रोज बैंक लाइसेंस वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किए जा रहे हैं। वे जमाकर्ताओं की खून पसीने की गाढ़ी कमाई वे बुढ़ापे का सारा बैंकों में डूब रहे, वे डूबने का आसार बनते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोरोना महामारी से पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट सिस्टम को रिस्टोर करवाने का भी आप आदेश कराएं। इस बिल को बहुत तैयारी के साथ अगर सरकार लेकर आती तो बहुत बड़ा फायदा देश के आम आदमी को हो सकता था। हालांकि CA के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में एक मिनट सर, एक मिनट राम कृपाल जी, एक मिनट, आप नहीं बोल पा रहे तो मैं आपकी जगह भी थोड़ा बोल दूंगा ना। हालांकि CA के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में ये एक ऐसा प्रोफेशन है CA का जो अपने क्लाइंट की उन्नति से स्वयं की उन्नति करता है। इसलिए इनके प्रोफेशन से जुड़ी समस्याओं पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। सभापतियों मेरी मैं इस चूंकि बिल आधा अधूरा आप लेके आए, आप गलतियां जो CA करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ इस बिल को वापिस अगर लेके आए जिसमें सजा का प्रावधान भी हो, पॉलिटिकल व्यक्ति की नियुक्ति भी हो और सारा सही ढंग से हो, तब जाके इस बिल का इससे कुछ होगा कि बिल सही रूप में आप लेकर। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए रोज नए नए कानून लाना और पास करना, रिकॉर्ड बनाना, इसके लिए आप ये नहीं करें। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद सभापति। रविंद्रनाथ। Thank you, Chairperson, sir, for the opportunity to speak on the Chartered Accountant Cost and Works Accountant and the Companies Secretaries Amendment Bill 2021. Sir, auditors
accountants and company secretaries are considered as the first gatekeepers of corporate governance, and our legal framework lays considerable faith and confidence in the system. Sir, I am sure that with emerging technologies such as artificial intelligence, there is going to be a major transformation in the accounting sector, which the accounting industry has to brace itself with. For example, automation, mini boards, machine learning, and adaptive intelligence are becoming part of the finance team at lightning speed. Sir, one way, it is a welcome development that the accounting sector is giving opportunities to several homegrown SaaS-based companies like Zoho, operating out of Chennai, to emerge as global cloud-based accounting companies. But on the other side, sir, these changes like evolving smart and digital technology, continued globalization of reporting standards, and new forms of regulations are creating major challenges for the professionals as well as the regulatory framework. Sir, before I conclude, I wish to propose 3 suggestions to this House, sir, to the Honorable Minister. Firstly, ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, is the world's second largest professional accounting body and largest professional accounting body of India, which functions entirely on a self-financing and self-sustainable model. The Institute has nearly 165 branches spread across the nation, with nearly 40 more chapters outside the country. Sir, I wish to request that the government, these institutes may be elevated as approved training institutes by Government of India to award employable certificates similar a diploma to interpost chartered accountant students, so that a huge industry shortage of trained professionals can be addressed. Since the infrastructure and finances are already available within the current system under the administrative and academic jurisdiction of ICAI, further investment and employment of trained teachers are not required. Secondly, sir, future accountants will increasingly need education in digital technology, globalization, and evolving regulation, and so on. Undoubtedly, the accountant of a future will need to be technologically savvy to evolve with the changing industry, and our training and regulatory mechanism should also be ensured to adapt to this changing scenario. Thirdly, sir, with regard to women participation, women reservation in the region and central council should be ensured by properly toning the government policy. With increasing presence of women in the CA professional, the women's cell should be strengthened to work and help the women members in solving their work-related issues. The real purpose of Women Empowerment Committee of ICAI should be taken up priority. Sir, this bill has brought in to tighten the disciplinary mechanism and streamline the functions of chartered accountants, company secretaries, and cost accountants. The bill aims to deal with the conflicts of interest between the administrative and disciplinary arms of the institutes. It is also expected to result in quick decision making in disciplinary matters of professionals through this fixed time frame of 90 days. Through this, sir, I support this bill. Thank you. Sir, thank you so much. The Chartered Accountant, Cost and Works Accountants and Company Secretariats Amendment Bill 2021 सरकार ने समय समय पर सीए प्रोफेशनल्स को एनकरेजमेंट किया है एवं हेल्प की है. सीए इंस्टीट्यूट ने भी अपनी पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग अपनाया है
एवं हर घड़ी सरकार की योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प की है। टैक्स कलेक्शन की बात हो अथवा अन्य किसी योजना को लोगों के बीच में लाने की बात हो, इंस्टीट्यूट ने हमेशा सरकार के साथ दिया है। सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सब्सिडी योजना, एक्सपोर्ट्स योजना, स्पेशल टैक्स जोन प्रमोशन ई योजना को जनता तक पहुंचाने में हेल्प की है। Sir, I just request you, I am just here, few of my CA people from my district and from Vidarbha basically and from Nagpur, they have actually spoken to me about this bill when this bill got introduced in this house, and immediate all the chartered accountants, they came and they visited and they spoke to me about this bill, ki what should be we should bring changes in this bill. I will just give few suggestions, sir. I am always there in the support of this party and the department and with the ministry. But I just wanted to give you, because from last 74 years, these people are serving India. They are working for India. They are working for progress in the people, in the favor of this India nation. Sir, I'll just give this bill to examine only CA Amendment Act. The proposal is out-of-box suggestion of IIA. It's commercially proposed to destroy the world best and cheapest courage by privatization of it through IIA. No need to establish IIA when we have the world best CA institute, sir. And it's like we are demolishing Nalanda like institute just for competition, which is not fair, sir. I am just here to, मैं यहाँ पे सिर्फ आज बोलने के लिए आई हूँ। मैं सीए लोगों की आवाज, मेरे क्षेत्र के और विदर्भ के लोगों की, जो सीए जो प्रैक्टिस करते हैं दिन रात, पूरी सरकार को दिन रात अपना समय देते हैं कि हमारी सरकार और देश की उन्नति हो, उसके लिए साथ देते हैं, तो उनकी कुछ त्रुटियां हैं जिसको हमने एज ए सजेशन लेना चाहिए। और कमिटी को भी बहुत बार अप्रोच किया। द सीए अमेंडमेंट बिल प्रपोज टू मेक चेंजेस इन द डिसिप्लिनरी mechanism of Institute of Chartered Accountants of India. The current mechanism is robust, useful, and was only put in place about a year ago. The bill proposed to increase government nominee from 2 to 3 and reduce the member of council from 3 to 2, sir. This is the main pain what the CA people are facing, sir. अगर कोई भी एक आधा व्यक्ति जो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अगर वो चेयर पे बैठता है, तो वो उस डॉक्टर को क्या न्याय देगा अगर वो चेयर के पास आएगा? अगर उसे पता है कि इसने इस जगह पे इस तरीके से अगर गलती की है, तो उसे किस तरीके से हमने सजा देनी चाहिए और किस तरीके से नहीं देनी चाहिए। सो दिस इज द रिकमेंडेशन, सर, फ्रॉम द सीए व्हाट आई एम गिविंग इन दिस हाउस. The current composition of disciplinary committee is 2 members appointed by the Government of India and 3 members of ICAI Council. The process so far has been smooth, practical and useful. The current system may be continued as there is no reason to change in less than decade. Currently, minimum 1 member of government should be present for a form a quorum. The bill proposed that the chairman of the bench will be government nominee and not a CA. This is the basically, sir, the chairperson, when you spoke about this. Mehtab ji spoke about this. Our Google uncle from Bengal, he spoke about this. Everybody talking about only this point. We don't have a problem about this bill. It is just the chairperson we are appointing. He should be a CA who has actually practiced in this field, not the non-chartered accountant practitioner. In the DC, mechanism is a quasi-judicial function, and only person who are from the same profession should sit in the judgment as fact are involved. The change is keen to placing non-legal or non-medical profession in the DC mechanism or bar council, medical council. The standing committee, while rejecting all the suggestion of ICAI, has gone beyond its mandate and proposed sitting up. Sir, I am always in the support of the government, and I am there, but it is just a little suggestion what I wanted to give in this house in behalf of my chartered accountant who belongs to Maharashtra and Vidarbha. Thank you so much, and I'm always there with sir. Thank you.
Thank you, Chairman, for giving me an opportunity to participate in this discussion on the amendment bill of the Chartered Accountants Act, the Cost and Works Accountants Act, and the Company Secretaries Act. Sir, I am proud to state that I am a chartered accountant, practicing chartered accountant, and I am here in this profession for the last 40 years. Sir, the Institute of Chartered Accountants of India since 1949 is being administered by, under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs. It is being managed by a council which has got 40 members, out of which 32 are elected from among the members of the institute, members of the profession. 8 are nominated by the Government of India. So there is already a control by the government. I don't know why the government should bring in such a bill where the control they want to, entire control to be taken off by the government or the bureaucrats. It is not fair, sir. Sir, the profession at the time when it was started in 1949, there were only 1,450 members. Now it is 350,000 members. Sir, the total number of students at the time when it was instituted in 1949, it was the number of students were less than 5,000. Now it is more than 8 lakhs. See, the students in 1949 was less than 5,000. Now it is more than 8 lakhs. Sir, our former President of India, he applauded the profession, stating that the chartered accountants are partners in nation building. All through the last 72 years, the profession was along with the government, whoever be the government in power. We have contributed largely, and for example, in 1985, the tax audit was brought in, and the chartered accountants are doing the tax audit. This was increased the revenue of Government of India to a large extent. So my humble request is that by bringing in certain provisions which will destroy the profession, that government should go back from that decision and it should not be implemented. Sir, say I would just go through the details of the provisions also. As per Section 21B of the Chartered Accountants Act 1949, the Disciplinary Committee of the ICAI currently consists of 5 members, in which 3 are members of the profession. And the President and Vice President of the Institute will be either will be the presiding officer of the Disciplinary Committee. Now, as was already mentioned by all the members, that the Disciplinary Committee is going to be headed by a bureaucrat. Is it correct? All professions, other professions you go through, it was already mentioned here. I would like, sir, it was, excuse me? It is an insult to the profession, no doubt at all. See, the disciplinary mechanism is a quasi-judicial work, and the members should have adequate knowledge and functional experience in the field of accounting standards. There are international accounting standards, the auditing standards, the commercial laws like income tax, GST, customs, money laundering, Benami property transactions, banking mechanism, and cooperative societies, etc. See, when a person coming from outside the profession, he do not have any experience in these matters. Which government secretary has got any experience in knowing accounting standards, auditing standards? It should not be allowed. Sir, the proposed amendment in the system, regarding the legal profession, it was mentioned by many members. The Bar Council of India, the Council of Architecture, the National Medical Commission, everywhere the person from the profession is heading the disciplinary committee.
The Section 9 of the Advocates Act 1961, sir, the Bar Council shall constitute one or more disciplinary committees. Each shall consist of 3 members, out of which 2 shall be persons from the elected by the council and its members, and the 3rd member shall be a person among the advocates who possesses the qualifications specified in the proviso of the section. Sir, the senior-most advocate amongst the members of the disciplinary committee shall be the chairman of the committee. Sir, as per the Architects Act 1972, all the complaints against the architects shall be investigated, and all inquiries relating to misconduct of architects shall be held by a committee of the council consisting of 3 members, of whom 1 shall be elected by the council from among its members, 1 member from among the members nominated under clause B, and 1 member among referred into clause D, subsection 3 of section 3. The chairman of the disciplinary committee shall be elected by the members of the committee among themselves. Sir, there also only a member of the profession becomes the chairman of the disciplinary committee. Sir, under the National Medical Commission Act, the medical registration board comprising of 5 doctors, among them 1 shall be the president, 2 whole-time members and 2 part-time members. Sir, in the proposed amendment to the Chartered Accountants Act 1949, the majority would be non-chartered accountants, that is, other than chartered accountants, who do not have any experience about the practical functions of the chartered accountants, which is not appropriate and not acceptable to the profession. The interference of the central government in the internal affairs of the institute is an attack on the autonomy of the institute. I recommend that the existing position regarding the composition of the disciplinary committee should be retained, and the presiding officer should be a chartered accountant, someone with the knowledge and expertise in practice about the application of the accounting and auditing standards. Sir, with these words I conclude. Thank you. Sri Saptagiri Ulaka. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on this very important bill, the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries Amendment Bill 2021. Sir, I rise to oppose the bill, and just like most of my colleagues, they have already mentioned the main issues. I don't want to repeat the thing, and in light of the time available, this bill changes have been proposed to existing legislations governing the apex institution of Chartered Accountants, Cost Accountants, and Company Secretaries. Sir, I was going through the Standing Committee report, and on this particular thing, on the proposed constitution of Coordinate Committee, explicitly it has been mentioned, constituting a coordination committee would amount to not only including the autonomy of the institute, but it may also hamper the decision-making authority of the council of the respective institute, which is evident from the functions proposed to be assigned to this committee under subsection 4. A coordination committee of all 3 institutes is already in place as a non-standing committee of the institute under section 17. This may be made a standing committee, and its term of reference should be to discuss and resolve common issues like multidisciplinary partnership. So this is the basic thing on the coordination committee. And now the revised coordination committee, it has a secretary who is heading the committee. I think this is an attack on autonomy, and I was hearing my esteemed colleagues from the Treasury benches. They have been mentioning that this bill has been brought in so that more autonomy could be given. But we have seen what happened in Medical Council. They will do the same in Bar Council, the Dental Council, each and every institution they're trying to attack. At the same time, they have the guts to say that we are giving you more autonomy. This is a joke on all of us. And sir, Chartered Accountant, I'll tell you a story about when we were in college. One of my friends was a topper in my batch. Accepting him, we all decided to get into engineering or medical profession. But that guy, he went into BCom and then he got into Chartered Accountant. So this institute, through their legacy and history, is a very, very renowned institute, nothing less than the IIMs or IITs. We don't need an IIA. The thing is, they have around 7.5 lakh students and 3.5 lakh members as of now, the ICAI. And what we are doing now is we are trying to dilute it just because our Honorable Prime Minister, he made a speech that your signature is more important than my signature. And what does this Parliament have to do? They have to bring a bill
where they say we'll give you autonomy, but they will take away your autonomy. Some main issues have been the striking of the names of defaults of the CA firms. This has been flagged. Approvals of names of CA firms registered with the institute. And when we talk about the Satyam story, sir, I was working with an IT company, Infosys. And when Satyam happened, the owner, he said, I'm riding on a tiger without knowing when to jump up. But I don't think it's a problem of the chartered accountant or the disciplinary committee or the standing committee. It's mainly because of the intentions of the director or the owner who forced these guys to get into this kind of book mismanagement and so on. So that is the main issue. We should try how we can more streamline this process, give them more power and everything. I'll come to the Board of Discipline. There, again, from the Standing Committee meeting, the Board of Discipline, what has been requested to the Standing Committee, the unprecedented provisions of appointing 2 non-CAs as members out of 3 members in the board may have a large-scale impact on the work of CAs would be majorly judged by non-CAs. So now what we are doing, what for the medical council, you will have an engineer who will be the head of the medical council. Similarly, you're doing for the CA, which is a major concern for them. And there are 2 basic things. I don't want to take much of your time. The dilution of powers of the chartered accountant profession. The Institute of Chartered Accountants of ICA has raised concern of the proposal to have non-chartered accountants, which I have mentioned as the presiding officer of the disciplinary committee. At present, the president or vice president of ICA acts as the presiding officer, a practice that the institute wants to continue. The second one is the vague terminology. The Chartered Accountants Act 1949 left the definition of other misconduct open-ended. According to ICAI, the old act allowed reprimanding, imposing fines, and even cancelling registration of members if the former believed that the member's activity brought disrepute to the institute. In the recent past, what has happened, sir, ICAI used this provision to arbitrarily censor the content that some CAs posted on the social media. The new bill doesn't address the issue of this whimsical censorship from ICAI. And moreover, sir, when we move to digital technology and the digital world, we should look at multiple ways of how we can enable that digital technology in enabling the CAs to perform the work more often. So that direction should be there, rather than giving, introducing the secretary as the coordination committee head won't help us in many ways. There's one last point, sir. Under the Act, in cases of profession or other misconduct, the committee may reprimand or remove the number from the register of the institute, impose a fine up to ₹5 lakhs. The bill increases the maximum amount of fine to 10 lakhs. I think this amount, I'm not sure what was the calculation methodology. Maybe a fair amount or something has to be discussed. And we should trust our CAs. They have been working for the last 75 years with much dedication, and they are also nation builders. So let's give them more autonomy rather than using the jingoism and taking up the autonomy and saying that we are providing autonomy when we are encroaching on the field areas. Thank you so much. And we oppose the bill. Thank you. Sri Anurag Sharma. Thank you, Honorable Sir, for giving me this opportunity. I stand here for you in complete support of this bill. Let me actually, there was some discussion earlier about how this bill is going to be changing our lives and the lives of my friends as CAs. And sir, let me remind this House that this, हम लोग क्रिकेट बहुत खेलें तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, ये तो वैसी बात होगी जब 2 टीमें क्रिकेट के मैदान में उतरती हैं और एक टीम 13 प्लेयर्स के साथ आ जाती है तो 11 उसके खिलाड़ी हो गए और 2 अंपायर्स भी वो साथ लेके आते हैं. तो ये यूपीए के ज़माने की लेगेसीज हैं जो ये चलता आ रहा है इतने सालों से. आज अगर सरकार ये बिल लेके आई है तो ये खाली 2 ही चीज़ों में महत्वपूर्ण है. कहीं से भी इनकी ऑटोनॉमी खत्म नहीं करी जा रही. आज भी ये कोर्स सेट करते हैं. आज भी कितने लोग पास आउट होते हैं, क्या परसेंटेज ऑफ पासिंग आउट होता है, वो सब सीएस के हाथ में ही रहता है. इसमें जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब अपन बात करते हैं ऑटोनॉमी की, तो ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट्स की किसी भी हालत में दखल अंदाजी नहीं की गई है. इसमें एक डिसिप्लिनरी बॉडी बनाई गई. जब यहां पर खाली आप 3-4 डजन केसेस पे इतने सालों से एक्शन ले पाए, तो टुडे व्हेन द नीड ऑफ द आवर
is India's fast growing economy. आज अभी उन्होंने जैसे कहा कि 7-7.5 लाख बच्चे सीए के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, 3-3.5 लाख सीएज हैं इस देश में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अमेरिका के बाद सबसे अधिकतम सीएज हैं। 3.5 lakh CAs work in India. But unfortunately, none of our best practices are recognized internationally because of lack of a disciplinary committee or work in the disciplinary committee. Today, when you talk about the big four, whether it's Deloitte, KPMG, EY, none of the big Indian companies have become of an international standard. In this country, today our people from the software industry lead the world. When we have so many CAs, why are our audited statements not accepted in NASDAQ or accepted worldwide? It's only because certain best practices have not been followed. Today I was happy to note that in this regard, global best practices adopted in US, UK, Australia, Canada and South Africa have been studied by the ministry. They've brought in some of these changes. Today, even in the UK, lay members, that means members who are not CAs, head the disciplinary panels. In UK, there are multiple bodies imparting education and regulating the accountancy profession, unlike India, where ICAI enjoys status of a statutory body. Even in the US, state boards of accountancy regulate the profession and licenses to practice is also given by them. Here, sir, there is no way the government is impinging on the autonomy of these. The only thing is the disciplinary action. यूपीए के सरकार के दौरान और इन सब में जगह हमेशा ये देखा जाता था कि एक बड़ी सिस्टम चलता था। आप भी सीए, मैं भी सीए हूं, तो भैया इसको छोड़ देते हैं। प्रेशर लाया जाता था, फोन बैंकिंग हुई है इस देश में, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लेकर सत्यम कंप्यूटर्स, आप किसी चीज का भी जिक्र कर लीजिए। ये इसलिए होता रहा क्योंकि ये प्रेशर लिया जाता था। आज अगर एक इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करी जा रही है फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, और मेरे एक मित्र अभी मुझको ही बता रहे थे कि आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ऑडिट बॉडी अपने पास है सीएजी, उसमें कोई सीए नहीं है, पर आज वो ऑडिट करते हैं कि नहीं पूरे हिंदुस्तान का। तो अगर इंडिया का ऑडिट सीएजी कर सकती है विदाउट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इट्स बोर्ड, और वो सब के सब एक एग्जाम दे के पास आउट किए होते हैं, तो आज अगर हम उसमें ये ला रहे हैं तो ये अच्छी चीज होगी। बिकॉज अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर में, तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना पड़ेगा, हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हम सभी को इन बॉडीज को इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो आज हिंदुस्तान की यूनिकॉर्न्स, इतनी सारी कंपनियां बड़ी बड़ी होकर विदेशों में जाकर रजिस्टर करना चाहती हैं, इनकी बैलेंस शीट्स पे जब साइन हो, अगर हिंदुस्तान की फर्म का साइन होगा तो हम सबको उस चीज पे गर्व होगा। हम सब चाहते हैं कि ये 4 बड़ी कंपनीज के अलावा 4 और हिंदुस्तान कंपनियां हो। एक जमाने में सर 2 बड़ी हिंदुस्तान की कंपनियां होती थी, टीवी और बाटली बॉय, मेरे ख्याल से वो आज खत्म भी हो चुकी होंगी। आज मेरे ख्याल से बहुत छोटी रह गई होंगी इफ यू कंसिडर देम एज फार एज एन EY और a Deloitte is concerned. Today, these companies not only employ CAs, CSAs or cost accountants, they also employ business managers. They're complete turnkey consultancy firms. So today when we talk about a coordination committee, where does the coordination committee come in? For large corporates, even in India, where a medium scale to a large corporate company is concerned, it has to have the services of all 3, a CA, a cost accountant, as well as a CS. So coordination committee helps in making sure that the best practices are followed and the companies are rightly advised. This has been a major lacuna in our framework. So I think by bringing in this bill, I would like to compliment the Ministry of Corporate Affairs कि आप जो ये करने जा रहे हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था, बहुत जरूरी स्टेप था।
हम कहीं पे भी ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारे सीए मित्रों ने इस देश की सेवा नहीं करी। हम कहीं पे भी ये नहीं कहना चाह रहे कि साहब जो कंपनी सेक्रेटरीज वो कम काम करते हैं। हम कहीं नहीं कह रहे कि कॉस्ट अकाउंटेंसी नॉट इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट कहती है ये सब चीजें जरूरी है, पर इनकी एक ओवरसाइट भी होनी चाहिए। आप खुद ही मैच खेलें और खुद ही अपने ही रेफरी बनाएं, वो गलत होता है। आज अगर हम किसी चीज में अपने स्पोर्ट्स में भी देखें तो रेफरी बाहर के ही आते हैं और बाहर के ही लोगों से आप तभी विश्वास जागता है। अगर हिंदुस्तान में मैच हो रहा होता है, साउथ अफ्रीका रेफरीज आते हैं सर। हमने अपना ही पिच प्रिपेयर किया और अपने ही रेफरीज रख लिए, तो फिर कौन मानेगा इस चीज को? तो इसलिए ये जरूरी होता है। एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट फॉर फॉलोइंग सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस which are now being practiced in India. I'm happy to note that most of these advices given by the standing committee have been accepted, are there. The only tricky issue here remains to be seen is whether the chairman should be from the CS themselves or from outside. I think for Sir, if I can complete, you can please interject later. No interference, please. I didn't interject when you were speaking, sir. So if you allow me that courtesy, I would be very grateful. Namaste. When you spoke, nobody interfered, na? You made your point clear. So I appreciate what the honourable member had said. I appreciate your concern for the CS, sir. I worked with CS all my life. I work as a corporate with them. I appreciate the great work you've done. But yes, there needs to be an oversight body. Your autonomy is nowhere being impunged by the government. You are still deciding even the number of CAs which pass the exam every year. In fact, we need to up that because a lot of brilliant children get rejected during the exam and they actually face a lot of heartburn and heart failure. किसी को भी एग्जाम में फेल होने के बाद अच्छा नहीं लगता सर, वो बच्चे सब ब्रिलियंट होते हैं। जितने हम सीएस किस देश में तैयार करेंगे, क्योंकि आप आज जीएसटी में भी सीएस हमारे साथ काम करते हैं, आज कॉर्पोरेट टैक्स लॉ के लिए भी सीएस साहब काम करते हैं, सीएस साहब आज हमारे इनकम टैक्स के लिए भी काम करवाते हैं। सो सारी चीजों में सीएस और सीएस का काम रहता है। हमको जब एनर्जी ऑडिट की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि एटलीस्ट इस बॉडी की वजह से हिंदुस्तान के लिए आगे जो हमारे लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट जाएंगी, हमको वहां पे दूसरी बार जाके उनको फिर से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद दिस few words, I would like to commend this bill to the House, and I hope the House passes it with a thumping majority. Thank you. Thank you. Sri Arvind Sawant. Thank you, Chairman, sir. The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2021, on which I would like to express my opinion. Sir, I have listened to a lot of people who are expertise, who are chartered accountants. One of the finest man, gentleman Anuragji also spoke very well right now. I listened to you also. Sir, the fact remains that the institutes, right now there is only one institute. I don't know why you are saying institutes. Only one institute is right now. Indian Institute of Chartered Accountants is the only institute in the country. There is no IIT like IIT, IIM, in number of institutes are there in number of regions. Only one institute is there. And as he has rightly pointed out, out of 40 directors or 40 members of the board, 32 are getting elected, 8 are being nominated by the government. What Anurag Sharma ji has expressed, I appreciate one point, he want to upgrade the standards and all. Okay, we is fine, we are supporting that idea. But the fact remains that the autonomy of the institute is being introduced by the government. And what is the interest behind it? The standing committee itself has given a report in which they have categorically mentioned that the appointing a chairman or a president for the disciplinary committee from the bureaucrat is objectionable. And he has given an example that CAG don't have a chartered accountant. I hope the honorable gentleman will go and clear it, whether the chartered accounts are there in CAG or not. Why you need a bureaucrat? First thing. Secondly, why you need to interfere in this institute or intervene in the institute? Why you want to destroy the autonomy of the institute? And why, while doing so, the institute which has served the country
for 70 years, 30, 40 years, whatever it may be. While you brought GST, you brought so many other things. You had a deal with the SEBI, RBI, everywhere. The Chartered Accountant Institute always help them, cooperated them, even in finalizing the taxation also they have come forward and help the government. Now see here, in clause 9A, there shall be a coordination committee consisting of the president, vice president and the secretary of the council of each of the institutes. Each of the institutes. Where are the others? I would like to know. Each of the institutes, there is only one institute. Are you going to form more institutes region-wise? Let it be very clear from that. The cost accountant of India and company secretaries of India for the development and harmonization of the profession of chartered accountant, cost accountants and companies. Is it not, harmony is not there? I would like to know from you. You are a chartered accountant. Whether the harmony is not there. Sir, I am lucky. I stay in Mumbai. Chairman was from Mumbai, I think. 1 minute. There is no competition between these institutes. That's what I'm saying. They are going 1 minute. Harmony. Savanji, please address the chair. I'm asking you harmony. Forget about that. I was really lucky to attend the convocation programs of them. The students, outstanding, meritorious, as he has rightly pointed out. The engineer did not go, he went to a chartered accountant exam. And then when I was speaking to them, I said, in the entire educational system, chartered accountants are the only ekalavyas. So there is no college. You show me a chartered accountant college in the country. There is no college. The students are studying of their own and appearing for the exam. And I said, you are the ekalavyas. Outstanding. And brilliant students are coming out of it. And when they are doing something, you have lost the trust in that. I do remember in 2017, when the Honorable Prime Minister had addressed them, he had a concern, definitely he had a concern. He had a concern about certain irregularities being done by some of the businessmen and so many people. So many industries have ran away from the country. If you look at the NCLT, somebody has referred it. Look at the NCLT's decision, sir. The way NCLT is working, I would like to know from the Honorable Minister, after the formation of the NCLT, what are the decisions given by the NCLT? How many cases have dealt by the NCLT, and look at them. Look at Jet. The company which is having a capital of around thousands of crores is being sold for a few crores. And then they ask the bankers. The bankers are who? Our own PSU banks. Do you have any objection? They simply say no. Why? Who is advising to say no to? Because they have given the loan. The debt is from the bank, PSU bank, and in front of the NCLT court, they say, do you have any objection if you get 300 crores or 400 crores? They say no. This is what is happening, and there we need a chartered accountant. As far as the other issues are concerned, I feel the standing committee has 1 minute. I'll just within a minute. I know because a lot of people have talked about it, and I know what are the opinion. I support what are the ideas they are serving. I'll request the Honorable Minister that look at the standing committee's report, and I will again request you. Better now. Where is the attention? Enlighten me. He can enlighten me on this, because what I heard is that the institute is having 15,000 crore rupees with them. Is it correct or wrong? 15,000 crore. 1,500 crores. Sorry, I'll correct it. There's no problem about it. 1,500 crore rupees are with them. Now the government's committee will come. And who will intervene? Where the money will be spent? Nothing is mentioned in this. Finance, no money. वो कह रहे हैं उनको पैसा नहीं देना है. अरे पैसा नहीं तो उनके पास पैसा है. आपका ध्यान उस पैसे पे है क्या? वो भी तो बताओ. Please conclude. तो मालूम पड़ने तो हमें whether we are paying attention over there. That is what I feel, and therefore I request the chairman to the minister, to the minister, let us send this bill to this selection committee again. Let us discuss this elaborately, and let us come with a very good bill which will protect the investors also and which will serve the institute also. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Sri Adhiranjan Chaudhary. Sir, हमारा member रही है sir. One member is left from our end, sir. One member is left, sir. Here also. Oh, sorry. Oh, BJP 10 is there, na? Yes. Sri Ravi Kishan. सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, अध्यक्ष महोदय। संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं मैं और सपोर्ट करता हूं, जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों का कारण
कथन में लिखा गया बहुत ही पारदर्शिता के साथ, क्लैरिटी के साथ है। आई वॉज हियरिंग ऑल मैं सारे माननीय सदस्यों को सुन रहा था, बट ये सारे सदस्य ये नहीं जान रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और इस देश में अब वो समय आ गया है जहां पर हम लोग साफ साफ चीजों को देश के सामने रखें। ये देश एक नया भारत बन रहा है, एक नई सोच का भारत। 1959 में व्हाट हैपेंड, 1949 में व्हाट हैपेंड, उसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए हम इसको बदलते हुए तंत्र को स्ट्रांग करना है, उनको सिक्योर करना है। संस्थान इसके जो सदस्य हैं संस्थानों के, उनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में एक समय सीमा के भीतर से निपटाना, जवाबदेही तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने संबंधित संस्थानों की परत परिषद को स्वायत्तता प्रदान करना इत्यादि शामिल है, जो बहुत ही क्लियरली बताता है कि अब ये देश बदल रहा है, चीजों को बदलना जरूरी है, देश को जानना है, देश की जनता को जानना है कि सत्य क्या है, लोग क्या हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, वेदर दे आर सीए, वेदर दे आर इनटू इनकम टैक्स, वेदर इन द गवर्नमेंट फर्म, एनी काइंड ऑफ फर्म, दे वांट टू सी कि भैया क्या हो रहा है, हमारे देश का क्या हो रहा है, मेरी देश की जनता का क्या हो रहा है, मेरे टैक्स के पैसों का क्या हो रहा है, कैसे पीपल ऑपरेटिंग, कैसे मेरा देश बढ़ेगा, कैसे 135 करोड़ की आबादी स्ट्रांग होगी, कैसे हम सुपर पावर बनेंगे। तो ये सारे पॉकेट्स को और ये सारी जो संस्थानें हैं और संस्थाएं हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं और वो बिल उसी से आधारित है और उसी के अनुसार है। अब अपोजिशन को भी ये जानना जरूरी है कि ये देश बदल रहा है, अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है विद ट्रांसपेरेंसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि आज के बदलते परिवेश में जवाबदेही, पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर इंसान चाहता है कि भैया क्या हो रहा है जीवन में, भैया मेरे पैसों का क्या हो रहा है, भैया मेरा देश कहां जा रहा है, कैसे ये संस्थानें, भाई अब चल रहा था 1949 में कुछ बना था, अंग्रेजों से कुछ हम लोग प्रभावित थे, वो सारे बिल गए, वो क्या नियम थे, वो क्या कानून थे, वो लद चुके हैं। अब लोग निकलना चाह रहे हैं, लोग एक 2021 में मोदी जी के साथ विश्व को देख रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता बने हमारे प्रधानमंत्री, भारत पर पूरे विश्व की नजर है, भारत ग्रो कर रहा है, भारत ही एक ऐसा देश है जो अब ग्रोथ की तरफ है और पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं, उसमें हमको उनका साथ देना चाहिए। चूंकि मैं सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा रहा तो सीए के साथ और अकाउंटेंट्स के साथ, ये सीए एक ऐसी संस्थान है और चार्टेड अकाउंटेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने मुझे पहली बार लॉ सिखाया अध्यक्ष महोदय, कि नो यू हैव टू पे द टैक्स। जब मैं कुछ पैसे कमाने लगा तो मुझे बोला नहीं, यहां पे आपको भैया, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने कहा कि, तब मुझे एहसास हुआ कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं सरकार का आदमी तो नहीं है, ये सरकार के लिए काम करता है, ये क्या है, ये व्यक्ति क्या है, ये संस्था क्या है, ये लोग कौन है, जो पूरा पैसा मेरी मेहनत का मैं कमाता हूं, वो मुझे उसने बताया कि ये जाएगा देश के लिए। ये आप जो पैसा सिनेमा की शूटिंग से कमाते हैं, जो आप टैक्स भरते हैं, वो, और मैं करीबन 30-35 साल से आई एम अ टैक्स पेयर, तो मैं जो कमाता था, मेरा सीए आता था हमको समझाता था कि ये पैसे ऐसे जाएंगे। तब मुझे पता कि नेशन बिल्डिंग में ये संस्था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस फर्म, दे आर सो स्ट्रांग, ये लोग इतने महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इस देश के, इनको सिक्योर्ड करना, उनको पारदर्शिता में लाना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भारत सरकार का काम है और ये अब सोचा गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं और इस संसाधनों के साथ, नहीं डेफिनेटली ये, भाई आप लोग समझ रहे हैं, भाई समझ रहे हैं आप लोग, नहीं बहुत हमदम सही बता रहे हैं, इसको एकदम सही तरीके से जा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग नहीं समझ पा क्या, नहीं आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो दिक्कत यह है कि उस कुर्सी पे चले जाने के बाद आधी बुद्धि बंद हो जाती है। प्लीज कंक्लूड। वो कुर्सी का दोष है। थैंक यू श्री दनीश अली। तो अब ये देखिए कि ये देश कहां, और आप लोग भी गर्व करते हैं, आप लोग भी बड़ा महसूस करते हैं कि अब भारत कैसा हो गया, आप लोग विदेश भी जाएं। अभी हमको 1 तारीख को चार्टर्ड अकाउंटेंट
अध्यक्ष महोदय क्षमा चाहते हैं, बस मैं आई एम फिनिशिंग नाउ, बट मैं आई जस्ट वांट टू से कि संसाधनों के संस्थानों को प्रोफेशनल विरुद्ध इनके साथ जो भी निर्णय में मदद मिलेगी देश की आर्थिक प्रगति के लिए कानून में परिवर्तन आवश्यक होता है। लेखापाल अधिनियम 1980 के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में जवाबदेही पारदर्शिता को हर विभाग में केंद्र में लाया जाए, ये देश की सख्त जरूरत है। यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। बस आई फिनिश नाउ, फिनिश प्रस्तावित संसाधनों के इन संस्थानों को पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बस मैं ये चाहता हूं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, इस देश को स्ट्रांग करने के लिए सत्य हमेशा सामने रहे। धन्यवाद। श्री धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल बी ब्रीफ, यू आर हैविंग ओनली 3 minutes 21 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, ये सरकार झूठ जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है और मुझे ताज्जुब है इस बात का। एक तरफ तो सरकार जो है जितनी सरकारी कंपनियां थी जो पीएसयूज थी उनका निजीकरण करने में लगी है और दूसरी तरफ जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जितनी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो प्रोफेशनल्स की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनका सरकारीकरण करने में लगी है। ये कंट्रडिक्शन जो है इस सरकार का, ये इतना भयंकर है, ये देश को कहां ले जाएगा। सभापति महोदय, 1949 की ये संस्था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, सर उसका सरकारीकरण करने में लगे हैं। हर चीज में आपको सरकारीकरण करना है। मुझे ताज्जुब होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि इस देश में बाबू जो है रेड टेपिज्म को खत्म करना है, सब कुछ बाबू तय करते हैं। यहां क्या कर रहे हो? जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो खुद की ऑटोनॉमस बॉडी, वो लोग अपना इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसको खत्म करके आप बाबुओं को वहां बिठा रहे हो। वो बात अलग है कि आज इनका भी कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बना, परसों वहां भी बाबुओं को जो है वक्त आएगा, वक्त आने वाला है कि आप पॉलिटिकल लोग मंत्री नहीं बनोगे, आप मंत्री नहीं बनोगे, बाबू भी आएंगे और बाबू ही मंत्री बनेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए इस सरकार ने क्या किया है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कब्जा करना चाहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, कल आप कहोगे कि साहब बार काउंसिल को भी कंट्रोल करना है, परसों आपको बाकी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ी नहीं है। जितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज थी सबको ध्वस्त करने का काम आपने कर दिया है। साहब ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन प्रोफेशनल्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, देखिए 3.5 लाख जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो ये टेस्ट होता है सभापति महोदय, उस पर आज तक सरकार के तो कितने पेपर्स लीक होते हैं जो सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेस्ट का आज तक कोई आप नहीं कह सकते कोई पेपर लीक हुआ हो या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। ऐसी ऑटोनोमस बॉडी को आप जो है कंट्रोल कराना चाहते हैं। उनको अभी सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सांसद, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अनुराग जी, वो बोल रहे थे कि साहब खुद आप तय करेंगे, खुद ही खेलेंगे, खुद ही खिलाड़ी होंगे और खुद ही एम्पायर होंगे। साहब सरकार में क्या होता है? क्या सरकारी बाबू अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो क्या सेक्रेटरी अपने जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करता? क्या वहां पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलता? अरे ये कहां का तर्क है आपका कि वो ऑटोनोमस बॉडी है तो वो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बना सकती, जबकि सरकार के अंदर तो जो सीनियर ऑफिसर होता है वही जूनियर ऑफिसर खिलाफ कार्रवाई करता है। ये कंट्राडिक्शन है। One more, honorable members, one more member left out. Adhir Ranjan has to speak. Thereafter, the House may be adjourned. If the sense, I want to know the sense of the House. Let it be extended for 10 minutes. Sir, I'm just concluding. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। Please conclude. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं सर।
ये कहाँ, मतलब क्या सरकार में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सर, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मेडिकल कमीशन आया था, बिल आया था, हमने भी सपोर्ट किया था कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं अब कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ गया। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज में इंट्रूजन ना करे, उनकी स्वायत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। जो स्वायत्त बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको ऑटोनॉमी उनकी ग्रांट होनी चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी, no cross talks, please. No cross talks. Sir, I rise to make a short intervention into the legislative document, which is absolutely a voluminous document consisting of 106 clauses under the nomenclature of the Chartered Accountants, the Cost and Work Accountants, and the Company Secretary's Amendment Bill 2021. Sir, I know that there is a paucity of time, so I shall be very much brief on my deliberation. Sir, एक चीज तो मुझे ये लगता है कि we are getting wise after the event. That means एक के बाद एक फ्रॉड स्टार जब देश को लूट के भाग रहे हैं, तो हम उसके पीछे पीछे भी दौड़ रहे हैं। आज आप खुद देखो कि कैरिबियन सी के बगल में बैठ के हमारे नीरव मोदी साहब हिंदुस्तान की सारे पैसा लूट करके मस्ती बना रहे हैं, और वो सब हम फेसबुक पे देख रहे हैं। ये मोदी नहीं, नीरव मोदी, ये मोदी नहीं। हो सकता कोई ताल्लुकात हो भी हो, लेकिन ये अलग मोदी है, ये अलग मोदी। कोई ताल्लुकात ये नहीं, मुझे पता नहीं। तो कैरिबियन सी के किनारे बैठते हुए एक मोदी मस्ती मार रहे हैं, और हमारे यहाँ दूसरे मोदी जी के नेतृत्व में हम कानून बना रहे हैं। मतलब यही कहना मेरा कि वी आर गेटिंग वाइज आफ्टर द इवेंट। Sir, according to the Companies Act 2013, every company has to appoint a chartered accountant or CA in order to audit his accounts. In case of certain companies, the central government can direct conduct of cost audits by cost accountants. The Companies Act 2013 also requires certain classes of companies to appoint a company secretary to ensure compliance with provision of this Act. This is the background of this Act. In India, CA, CWA and CS are regulated according to the provision of the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountant Act 1959, and the Company Secretary Act 1980 respectively. The three acts provide for setting up of the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost Accountants of India, and the Institute of Company Secretaries of India. The affairs of the institutes are managed by the respective council. Sir, in recent years, India has seen several frauds and scandals. In the backdrop of a major fraud that took place during the NDA regime, Punjab National Bank in 2018, the central government set up the National Financial Reporting Authority. Under the Companies Act 2013, the NFRA is empowered to investigate matters of professional or other misconduct by chartered accountants or firms of chartered accountants. This was a move away from self-regulation of the profession of the chartered accountancy as was followed so far. Sir, I will focus on 5 issues. I will focus simply on 5 issues in regard to this legislative document. Number 1, while the bill reduces the role of the 3 professional institutes with respect to representation on the Board of Discipline and the Disciplinary Committee, it continues to rely on the councils for nominating the external members. Note that under the current framework, the external members on the Disciplinary Committee of the 3 professions
are nominated by the central government independently. Under the CA Act, the central government independently nominates one member on the Board of Discipline. It is unclear. I would also flag the attention of this government and the concerned ministry that it is unclear how the conflict of interest between the disciplinary and administrative function will be addressed if the council continue to be involved in recommending who could be on such disciplinary entities. Number one. Number two, sir, the bill provides for setting up a coordination committee chaired by the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs to coordinate functions of the three institutes and align cross-disciplinary regulatory mechanism for interprofessional development. The function proposed for the coordination committee may overlap with the current mandate of the three institutes and the council. For instance, the coordination committee will ensure quality improvement in academics, research, and all related work of the institute. It will also focus on coordination and collaboration among the profession. These activities are currently undertaken by the respective council and institutes. As the three institutes also have committees for coordinating among themselves, it is still unclear as to why there is a need to set up another coordination council. So it is simply an overlapping legislative document whereby government is going to set up another coordination council as proposed under the bill. Further, the proposed coordination committee will be chaired by the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs. This provision may certainly impinge on the independence of the three institutes. Sir, the bill seems to be turning the position of president in the three councils into a non-executive role. The secretaries of the respective councils are being designated as chief executive officer. However, the bill holds the respective presidents responsible for implementing the decisions taken by the council. It is unclear how the president will ensure that the decisions taken by the council are implemented when, at the same time, the secretary is proposed to carry out the administrative function of the institute as its chief executive officer. The bill seems to be separating the responsibility of the governance and execution by prescribing separate roles for the president and the secretary of the council. By holding the president responsible for implementing decision, which is an executive role, may be against the framework of separation of powers as proposed in the bill. So there is a gap between the cup. It is quietly and evidently it is manifested in this bill. There is a serious slip between the cup and the lip. Government is trying to hoodwink the people that yes, they are trying to take some proactive measures in order to stem the rot insofar as fraud and other issues are concerned. But in actuality, there is a serious flaws in the legislative document. Sir, last but not the least, the bill provides for disclosure of pending complaint or actionable information against members of the institutes and firms registered with them. For the three professions, the Board of Discipline or the Disciplinary Committee decide whether a member is guilty of an alleged misconduct. Publishing details of members or firms found guilty and imposition of any penalty may be useful information for prospective and current clients. However, recording details of actionable information or pending complaint in the register of members and register of firms before they are found guilty may adversely impact the reputation. That means chartered accountant may be called cheated accountant. So certainly we have to be very much cautious and treat the part very cautiously so as to dispel any kind of misapprehension. Sir, regulators of other professions such as doctors publish details only of those blacklisted or suspended from practice. According to National Medical Commission Act 2019, the Ethics and Medical Legislation Board and state medical councils are required
to maintain the national register and state register respectively. These registers contain details such as the name, address and all recognized qualification of licensed medical practitioner. While the Indian medical register contains details of doctors who have been blacklisted along with dates of suspension and revocation of suspension, it does not contain details of complaints against doctors. So, sir, again I am reiterating that this bill may be appeared as progressive, but in actuality, but in practice, it is nothing but a retrogressive step, only to hoodwink the common people of our country. Sir, CA की जरूरत है, ये सब मानते हैं कि CA की जरूरत है हमारे देश में. CA की जरूरत है, स्टैंडिंग कमेटी भी माना, मल्टीपल अथॉरिटी की जरूरत है, ये भी स्टैंडिंग कमेटी माना. ये स्टैंडिंग कमेटी की भी बात नहीं सुनते, इसलिए सर, finding no alternative, I have to oppose the legislative document, and with this word, I am concluding my speech. Thank you, sir. सभा की कार्रवाई बुधवार 30 मार्च 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.